Good morning, everyone. Welcome to Rayacademy. So, काली आमे जोटू छाड़ थिले पार्ट 3 तो कंप्लीट करथिले आज पार्ट 4 टू स्टार्ट करिवा. ठीक ठाक तो लाइव अछंदी लाइव अछंदी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. स्टार्ट कर दवा ना वेट ठीक अछि. तो पार्ट 4 रो हम स्टार्ट करथांते. तो देखियो फर्स्ट आज लेट करबानी आज बहुत क्वेश्चन ट्राई करिया मेजर पार्ट कवर कर दवा को जहां करंट अफेयर मेजर इंपोर्टेंट अछि मैक्स टू मैक्स. आउ आज पैटर्न या होची कि मु क्वेश्चन पढिबी तार किछि इंपोर्टेंट फैक्ट कहबी आउ आपण क्वेश्चन गुला जल्दी जल्दी ट्राई करिवे सॉल्व करिवे कमेंट सेक्शन में आंसर दवा को ट्राई करिवे. आ जहाँ जहाँ इंपोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स मु सेठी ही क्वेश्चन संगे आंसर माने कहि देबी आपण सेटा जट डाउन कर देबे. तो आपन को ही फायदा हो करंट अफेयर रिवीजन करिवारे जल्दी जल्दी. ठीक अछि. आज लेट करबानी जल्दी जल्दी स्पीड रे करबा जोडा इजी क्वेश्चन सेटा कम टाइम नबा. The first question होची consider the following statement with reference to poliomyelitis. एटा पोलियो विषय हम काली भी पढ़ी छे. देखि दबा जल्दी जल्दी. It is highly infectious bacterial disease that largely affects children under 5 years of age. The disease does not spread from person to person. Which of the statement is given above is correct? तो करेक्ट स्टेटमेंट पचारछि पोलियो विषय में काली पढ़ी छे. एटा फर्स्ट तो भूली बैक्टीरियल डिजीज नो इट इज अ वायरल डिजीज हैला. वायरल डिजीज आउ इट कैन डज नॉट स्प्रेड लिखी छी बट इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हैला. फिकोरल रूट रे स्प्रेड करे पोलियो वायरस टा तो इट कैन स्प्रेड हैला. तो एथरु को स्टेटमेंट माने करेक्ट स्टेटमेंट कोथ रे दीटा भितर के कोइ परियो कमेंट सेक्शन आंसर दवा ट्राई करो. यार आंसर होची लेट तो करबानी एटा इजी क्वेश्चन है. यार आंसर होची डी हैला. नाइदर वन नॉट टू कैन एटा वायरल डिजीज टा और इट कैन स्प्रेड. तब सेकंड क्वेश्चन देखिबा विथ रेफरेंस टू पार्किंसंस डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट disrupts the brain's ability to produce dopamine. Dopamine टा गोटे neurotransmitter हैला. The disease affects the older people only. Which of the statement given above is or are correct? Correct statement एथरे कोटा कमेंट सेक्शन आंसर दबा ट्राई करो. यार आंसर होची ए ओनली हैला. ए ओनली आउ या विषय किछि फैक्ट्स देखदा. पार्किंसंस डिजीज एथरे कोन हुए ना न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रो कंसंट्रेशन टा ब्रेन रे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए. न्यूरोट्रांसमीटर माने कोन दीटा न्यूरॉन्स जदी निज भितरे कांटेक्ट करिया को कि कम्युनिकेट करिया को ट्राई करंती से माने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करंती हैला. न्यूरोट्रांसमीटर तो गोटे इंपल्स जदी गोटे न्यूरॉन जनरेट होला सेटा आ गोटे न्यूरॉन को ट्रांसमिट होबा को न्यूरोट्रांसमीटर दरकार. तो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन गोटे न्यूरोट्रांसमीटर तो तार कंसंट्रेशन ब्रेन रे कमी जाए. तो कमी गले हमको पार्किंसंस डिजीज देखिया मिले. पार्किंसंस डिजीज रे कोन ना डोपामिन जते कंसंट्रेशन कमी जिवो हमर मूवमेंट रे प्रॉब्लम हो. तो देखिथिबो गोटे पार्किंसंस गेट थाए माने जो लोक मान को पार्किंसंस हेता से माने गोटे पर्टिकुलर स्टाइल रे चलंती. तांकर चालीबार स्टाइल गोटे पर्टिकुलर थाए. तो सेठू बहुत माने गोटे गोटे क्लिनिशियन गोटे जानि परिबो कि हां मे बी दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज हैला. तो यार बेसिक फैक्ट्स पार्किंसंस डिजीज रो या ट्राई करिवो नोट कर दबा को माने इजी हबो रिवीजन करिया को. फैक्ट्स गुडा जानथिले एग्जाम होले एई ऑप्शन न आसले भी अलगा किछ ऑप्शन आसे जोथरे कि तम आईडिया थिबो बेसिक ए जिंस विषय हैला. पार्किंसंस डिजीज न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन कंसंट्रेशन ब्रेन ने कमी जाए हैला. बुझी होची ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज और आर करेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स हैला सब ट्राए करिवो एग्जाम रे एमती सब यूकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ए सब जिंस को राउंड की अंडरलाइन कर दो ताकि तुमको एनालिसिस करियर सहज हो कि ए पॉइंट ठीक देछि कि भूल देछि हैला they are responsible for generating most of the cell's supply of adenosine type triphosphate ATP energy currency of the cell ATP है ना which is used to source of chemical energy which is used as source of chemical energy है ना तो दीटा स्टेटमेंट देला से पचारला आउ दीटा स्टेटमेंट अछि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए सेपरेट फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए फोर्थ स्टेटमेंट होछि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सेल्स एनर्जी नीड्स सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो एटा बेसिक एनसीईआरटी रो क्वेश्चन अछि डायरेक्ट सब जगह स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एनसीईआरटी रे मिले जिवो ए भितरु मते आंसर के कहि परिबो करेक्ट स्टेटमेंट चारटा स्टेटमेंट को तो करेक्ट कोटा 1 and 2 only 2 and 3 only 1 2 4 only 1 2 3 4 only ये चारटा स्टेटमेंट को करेक्ट कोटा ट्राई करो कमेंट सेक्शन में आंसर दबा को ठीक अछि मु कहि दउची फर्स्ट होची माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एटा ठीक स्टेटमेंट एटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तापरे दे आर रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया होची पावर हाउस ऑफ द सेल तो से कौन प्रोड्यूस करिवो एटीपी प्रोडक्शन करिवो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोटा को जे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हैला तो एटीपी प्रोडक्शन से करिवो तो काम एटा ठीक लिखा हिची तो स्टेटमेंट ठीक अछि तापर नेक्स्ट होची माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए सेपरेट फ्रॉम देयर न्यूक्लियर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया गोटे एमिति ऑर्गेनेल जार निजर डीएनए अछि तो तार निजर डीएनए तार फंक्शंस रेगुलेशन ए सब जिंस तार निजर डीएनए कंट्रोल करे तापर नेक्स्ट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सेल्स एनर्जी नीड्स हां फॉर एग्जांपल हम मसल जते बेला हम गोटे बेसी गोटे स्ट्रेनियस काम करछु तो हम मसल को बेसी एनर्जी दरकार होची तो यूजुअली हम मसल्स रे नॉर्मल सेल्स नॉर्मल बॉडी पार्ट्स टू अधिका माइटोकॉन्ड्रिया देखिया को मिले बिकॉज़ मसल्स रे एनर्जी नीड अधिका तो ये चारटा जाक स्टेटमेंट कोन अछि चारटा जाक स्टेटमेंट ठीक अछि तो यार आंसर होची ऑप्शन डी आउ गोटे जिंस मु एबे एठी कहि दोची आगु भी क्वेश्चन देखिबा ए जो माइटोकॉन्ड्रिया रो डीएनए अछि एठी लिखा है जो ओन डीएनए सेपरेट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए ए डीएनए टा ऑलवेज कम्स फ्रॉम मदर जेतेबेले फर्टिलाइजेशन हुए गोटे चाइल्ड माने गोटे फादर और मदर को भीतर रिप्रोडक्शन हुए आ फर्टिलाइजेशन हुए सेतेबेले जो ऑफस्प्रिंग रे जो डीएनए टा माइटोकॉन्ड्रिया रो जो डीएनए टा आसे सेटा ऑलवेज कम्स फ्रॉम मदर हला ओन डीएनए एटा ऑलवेज कम्स फ्रॉम मदर ए फैक्ट टा मन रखिया को चेष्टा करिवो एटा एबे बहुत न्यूज रे अछि थ्री पेरेंट बेबी तो सेइथरे ए कांसेप्ट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कांसेप्ट ही यूज हुए देखिबा आगे क्वेश्चन थिबा हम थ्री पेरेंट बेबी विषय भी देखि देबा सेई टाइम रे हला Next, with reference to the micronutrients, consider the following statement. First statement होची vitamin A, D, E, K are the fat soluble vitamins. Calcium, potassium and magnesium are the trace minerals. Which of the statement given above are correct? A direct question. Fat soluble vitamins कौन water soluble vitamins कौन कोटा trace minerals कोटा abundant minerals ए सब जिंस डायरेक्ट एनसीईआरटी रो क्वेश्चन एटा यार आंसर कौन हबो ट्राई करो कमेंट सेक्शन आंसर दबाको कहि दोची एटा तो ठीक ठीक स्टेटमेंट ए डी ई के आर फैट सॉल्युबल और बाकी जहाँ रहिले कौन रहिले विटामिन बी विटामिन सी एटा होची वाटर सॉल्युबल तापर ए गुडा होची ट्रेस मिनरल्स नुहे ट्रेस मिनरल्स कौन कौन से कोई कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम आदि ट्रेस मिनरल्स ए माने ट्रेस मिनरल्स नुहे ट्रेस मिनरल्स फॉर एग्जांपल आयरन सेलेनियम ए सब जिंस होची ट्रेस मिनरल ए सब कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम ए माने ट्रेस मिनरल्स नुहे तो यार आंसर कौन हबो करेक्ट पचारची तो यार आंसर हबो ए हैला
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा with reference to green hydrogen. Consider the following statement. It refers to the hydrogen that is produced using renewable energy sources through electrolysis. Electrolysis method re hydrogen production କରାଉଛି from renewable energy. Electrolysis involves splitting water into hydrogen and oxygen using an electric current. दिरा जाक basic statement. Hydrogen production normal आमे पढ़ीचे हाइड्रोजन प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू रे हुए तो सही जिनसटा कहछि ग्रीन हाइड्रोजन कोन तापर यार क्वेश्चन होछि करेक्ट स्टेटमेंट हम फाइंड करे रहछि वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन एंड टू यार आंसर डाइजिटा एटा हम लेट करबानी यार आंसर होछि सी बोथ वन एंड सी ग्रीन हाइड्रोजन माने कोन जोटा की रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके प्रोडक्शन करिवो एबे तम काम कोन ए जदी ग्रीन गोटे कलर आसला तार अलगा कलर भी थिवो ब्लैक हाइड्रोजन कोन तुमको जानिबार अछि पिंक हाइड्रोजन कोन पिंक हाइड्रोजन जोटा की ए जगह जदी पिंक थिवो पिंक हाइड्रोजन कोन एटा होछि न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके जदी हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन करिवा हैला न्यूक्लियर एनर्जी यूज हो जदी हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे ताको कहजो पिंक हाइड्रोजन सेमिति ग्रे हाइड्रोजन कोन ब्लैक हाइड्रोजन कोन ए सब जिंस कलर कोडिंग जो अछि हाइड्रोजन रो सेगुडा को ट्राई करिवो टिके देखिया को बिकॉज़ एटा करंट अफेयर अछि केकना एबे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत न्यूज रे अछि ओके नेक्स्ट एटा तो काली पढिचे आदित्य L1 मिशन विषय रे with reference to the Aditya L1 mission consider the following statement the mission is placed at the Lagrange point L1 allowing continuous observation of the sun okay first statement data all 7 payloads on Aditya L1 are designed to carry out in situ studies of particles and fields हैला दीटा स्टेटमेंट तापर थर्ड स्टेटमेंट is one of the mission's objective is to study coronal mass ejections and solar flares which of the above statement is or are correct तीनटा स्टेटमेंट देला हैला फर्स्ट दीटा स्टेटमेंट कोन ना आदित्य L1 मिशन विषय से पचारची फर्स्ट स्टेटमेंट होची इट इज प्लेस्ड इन द लैग्रेंज पॉइंट L1 allowing continuous observation of the sun okay second statement all 7 payloads सातटा पेलोड अछि सेतरे जोटा की यूज करा होची इन सिटू स्टडीज पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल स्टडी करिया को थर्ड स्टेटमेंट ची वन ऑफ द मिशंस ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी कोरोनल मास इजेक्शन जोटा की सन रु बाहर होची और सोलर फ्लेयर्स व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट 6 नंबर आंसर ट्राई करो कमेंट सेक्शन दबा को 6 नंबर आंसर ठीक है यार आंसर होची बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट ता भूल से लिखिची कोन ना ऑल दी 7 पेलोड्स ना सातटा पेलोड नहीं सातटा पेलोड अछि बट सेथरु तीनटा यूज करा होची ये पई इन सिटू स्टडीज पई हैला तो से स्टेटमेंट ता देखि की भूल लागुची बिकॉज़ एक्सट्रीम स्टेटमेंट गुटे टाइप रो सातटा पेलोड जे सातटा जाका सातटा गुटे जिंस पई यूज होची सेमि तो हबोनी ना गुटे जदी गुटे मिशन पठा होची देन ऑब्वियसली मल्टीपल डायमेंशंस को सेमन ट्राई करिवे रिसर्च करिया को कवर करिया को तो सही स्टेटमेंट ता भूल और फर्स्ट दीटा स्टेटमेंट ठीक ए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक ओके which of the following statement is correct with reference to quantum gravity हैला क्वांटम ग्रेविटी विषय पचारची ग्रेविटी तो हमें नॉर्मल पढ़ीचे बट क्वांटम ग्रेविटी कांसेप्ट कोठी आसुची जोठी की क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम पार्टिकल्स रो इन्वॉल्वमेंट रोजे जेमति की ब्लैक होल रे नले दीटा गैलेक्सी रो एजेस रे जोठी की माने ग्रेविटी नॉर्मल बिहेव करिवनी न्यूटनियन नॉर्मल न्यूटनियन ग्रेविटी लॉ जहा सब होची से सब जिंस सेठी मोस्टली फॉलो हुएनी बिकॉज़ सेठी बहुत एनोमलिटीज देखा जाय हैला तो सेठी क्वांटम ग्रेविटी कांसेप्ट गोटे आसे First statement होची it states that a body immersed in fluid is subjected to upward force equal to the weight of the displaced fluid हैला next B होची it seeks to describe gravity according to the principles of quantum mechanics C होची it clarifies that a body at rest will remain at rest unless outside force acts on it
D होची it highlights that gravitational and inertial forces are of similar nature and often indistinguishable. तो यार आंसर कौन पचारछि से क्वेश्चन पचारछि करेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड करियर अछि एथरो करेक्ट स्टेटमेंट कोटा 7 नंबर आंसर कोन ट्राई करो कमेंट सेक्शन आंसर देबा को 7 रो आंसर कोन ट्राई करो भूल हेले किछ असुविधा ना चैट सेक्शन आंसर देबा को ट्राई करो 7 रो आंसर ए की ना ना 7 आंसर होची बी मु बुझे दूची कोन पई 7 रो आंसर होची करेक्ट स्टेटमेंट होची बी हैला मु कोन कहितली क्वांटम ग्रेविटी माने कोन ग्रेविटी रे जतरे इन्वॉल्व हो क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम पार्टिकल जतले गोटे जगह रे क्वांटम पार्टिकल्स रो इन्वॉल्वमेंट अछि सेठी आमे क्वांटम ग्रेविटी विषय रे कहबा नॉर्मल न्यूटनियन लॉ सेठी फॉलो होबनी सेठी बहुत एनोमलिटी देखा जिवो बिकॉज़ क्वांटम पार्टिकल्स रो प्रॉपर्टीज बहुत अलगा सेठी ग्रेविटी बहुत डिफरेंट वे रे बिहेव करिवो हैला तो ए स्टेटमेंट ता ठीक इट सीक्स टू डिस्क्राइब ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म कहली काइना क्वांटम पार्टिकल सेठी इन्वॉल्व होउछंती तापरे फर्स्ट स्टेटमेंट ता it states that body immersed in fluid is subjected to upward force equal to the weight of the displaced fluid एटा पढ़ी थिबो तुम माने साइंस रे बुएंसी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल एटा ई विषय रे कहूची हैला बुएंसी आर्चिमेडिस प्रिंसिपल एटा तो हमकु पछरची क्वांटम ग्रेविटी विषय रे एटा गोटे अलगा जिंस हैला आ सी टा देखो इट क्लैरिफाइज दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अनलेस एन आउटसाइड फोर्स एक्ट्स ऑन इट एटा कोटा न्यूटन हमें पढ़िथिले न्यूटन रो गोटे लॉ कोटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट एटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट विषय रे कथा कहूची एट तो ग्रेविटी रो किछि एबे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नाही इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैला तो सेहित में स्टेटमेंट बी टा होची ठीक ओके नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन Alzheimer's disease is classified under which of the following categories of disorder Alzheimer's disease एटा बहुत मूवी रे भी आसुची रिसेंट जो मन देखिथिबे मूवी ए जिनसडा बहुत आछि न्यूज रे Alzheimer's disease is classified under which of the following categories of disorder first होची musculoskeletal diseases infectious diseases neurodegenerative diseases autoimmune diseases यार आंसर कोन एटा इजी टा काली भी बोधे एटा देखिथिले Alzheimer's disease ट्राई करो 8 रा आंसर दबा को एट आंसर टा इजी टा एट आंसर होची न्यूरोडिजेनेटिव डिजीज अल्जाइमर डिजीज कोन इट इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया डिमेंशिया इन द सेंस विथ एजिंग मोस्टली एटा ओल्ड एज रिलेटेड देखा जाय खाली मोस्टली कहली माने खाली ओल्ड एज रे एमति नै यंग एज रे भी देखा जाय पारे हला बट यूजुअली ओल्ड एज रे देखा जाय अल्जाइमर डिजीज एटा डिमेंशिया डिमेंशिया माने कोन ना द पर्सन टेंड्स टू फॉरगेट धीरे धीरे मनुष्य तार जो मेमोरी पावर अछि सेटा को लूज करि चलिबो आ धीरे धीरे जिंस को भूली चलिबो माने बहुत जिंस एबे जहा से चिंची धीरे धीरे किछि दिन परे कोइ तो सेटा जानि न पारे हला तो डिमेंशिया माने विथ टाइम ही इज फॉरगेटिंग थिंग्स सेटा डिमेंशिया एटा गोटे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज हला आंसर सी तापरे नेक्स्ट with reference to Mercury consider the following statement it is the hottest planet in the solar system Mercury doesn't have any moons दीटा स्टेटमेंट देला मर्क्यूरी विषय बेसिक फैक्ट्स ज्योग्राफी बही मिलिबो साइंस बही भी मिलिबो यार आंसर करेक्ट स्टेटमेंट एम दीटा भीतर पचारछि करेक्ट स्टेटमेंट कोडा वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन एंड टू बहुत इजी ट्राई करो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर करियो 9 रो आंसर कोन हां 8 रो सी ठीक अछि न्यूरोडिजेनेसिस गुड वेरी गुड 9 रो आंसर कोन है जल्दी जल्दी 9 रो आंसर ठीक अछि 9 रो आंसर होची बी हला टू ओनली
तो एबे मोर क्वेश्चन होची टू ओनली माने कोन एटा ठीक अछि मर्क्यूरी डजंट हैव एनी मून्स फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर प्लैनेट हमको जणा अछि मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू सन बट इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट ता माने हॉटेस्ट प्लैनेट किए ताले हम पूरा सोलर सिस्टम रे जति की प्लैनेट्स अछन से भीतर सबटो हॉटेस्ट प्लैनेट कोटा की कोइ परिबो एटा बेसिक यस करेक्ट बी अच्छा ताले तमे जानि थिलो फर्स्ट टा भूल तो फर्स्ट रे हॉटेस्ट प्लैनेट कोटा ताले जति मर्क्यूरी ने हॉटेस्ट प्लैनेट कोटा वेरी गुड ट्राई करो चार्ट रे आंसर दबो हॉटेस्ट प्लैनेट कोटा सोलर प्लैनेट रे हमरो बेसिक फैक्ट्स गुडा जानी थाओ किछि कोठी ऑप्शन ने आसी जिवो एलिमिनेट करिया रे सहज हबो मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट नुहे वेनस होची हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस होची हॉटेस्ट प्लैनेट बट वेनस तो सन रु दूर रहछि बट एटा हॉटेस्ट प्लैनेट केमिति हैला जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एटी बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट अछंती तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत हुए ए प्लैनेट रे तो सेहि पय यार टेंपरेचर बहुत अधिका तो वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट हैला बेसिक फैक्ट्स नेक्स्ट बीपी कोलंबो एटा गोटे मिशन टा हैला स्पेस मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द जॉइंट मिशन ऑफ बीपी कोलंबो जॉइंट मिशन ऑफ कुकू कंट्रीज रो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी जापान जाक्सा एंड नासा एंड इसरो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा एटा होची जापान रो हैला तो यार आंसर कोन हबो 10 रो यस करेक्ट वेनस रीजन टा भी जानि तो सेठी ग्रीन हाउस गैसेस बहुत अछि हैला तो सेति पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत हुए सेठी टेंपरेचर हेत पे बहुत अधिका था करेक्ट वेरी गुड बीपी कोलंबो मिशन टा कु दीटा ये भितरे आउ नेक्स्ट कु करेक्ट वेनस बीपी कोलंबो मिशन टा ना बी नुए 10 रो बी नुए ना 10 रो बी नुए 10 रो होची डी हला जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एबे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जानिबार अछि बीपी कोलंबो टा लॉन्च कराइस तो तार मैंडेट कोन तो यार मैंडेट होची मर्क्यूरी को स्टडी करबा हला आ मोर प्रिसाइजली कहले मर्क्यूरी रो साउथ पोल हला साउथ पोल ऑफ मर्क्यूरी को स्टडी करिया को बीपी कोलंबो मिशन टा लॉन्च कराइछ ओके वेरी गुड चलो बेसिक फैक्ट्स गुडा जानि था मिस एटा जानि गलो किए लॉन्च करूची कहा को स्टडी करिया को होची मर्क्यूरी आ मोर प्रिसाइज जदी पचारला मर्क्यूरी रो साउथ पोल बेसिक फैक्ट्स गोटे क्वेश्चन में एमती डिराइव करिया ट्राई करबा क्वेश्चन 3 रु ही बैक ट्रैकिंग करिके तार कोन इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम देखि दबा तो बेसी टाइम लागिवनी जल्दी रिवीजन भी हे जिवो नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू सेमीकंडक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट सेमीकंडक्टर विषय पचार तो किछि फैक्ट्स देइथिबो कैरेक्टरिस्टिक्स देइथिबो ता विषय देन पचारथिबो भूल के ठीक देखियो से देइछि ना नहीं दीज आर मटेरियल्स विथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट फॉल बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ओके नेक्स्ट in a process called doping small amount of impurities are added to these pure elements causing large change in the conductivity of the material which of the statement given above is or are correct 11 number answer कोन करेक्ट पचारछि हला 11 number answer वेलकम इंपोर्टेंट डिटेल्स गुडा जट डाउन कर देई थाओ जल्दी शॉर्ट नोट गोटे लाइनर लिखि दियो तो लास्ट बेल को एग्जाम टाइम बेल को तुमको रिवीजन करिया भी सहज होई जिवो करंट अफेयर्स गुडा जा सब न्यूज रे मोस्टली थिला 11 रा आंसर एटा इजी टा मु कहि दोउची एरा आंसर होची सी हला बोथ 1 एंड 2 तो एने कोन सेमीकंडक्टर होची सेमी ता ना हुई जणा पडुची कंडक्टर एथियो बट सेमी तो यार रेंज ता का भीतर थिबो इन्सुलेटर और कंडक्टर मझी रे ना कि पूरा कंडक्टर बोलिया
हाईली कंडक्टिव ना कि इन्सुलेटर बेले जोटा कि किछि ही कंडक्टिविटी करूनथो इट इज इन बिटवीन माने सर्टेन कंडीशन से माने कंडक्टिव रहिबे सर्टेन कंडीशन से माने कंडक्टिव रहिबेनी को कंडीशन से माने कंडक्टिव रहिबे जेतेबेले हमें तांका संगे डोपिंग करिबा डोपिंग माने गोटे सेमीकंडक्टर रे हमें जेतेबेले इम्प्युरिटीज ऐड करिबा तो ताकू डोपिंग कुआ जाय जानिथिबो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर रे थाए सेटा डोपिंग थ्रू रे पीएन जंक्शन ता जनरेट हुए तो सेते जेतेबेले हमें सेमीकंडक्टर रे इम्प्युरिटीज ऐड करिबा तो सेटा बेले कोन हबो ना धीरे धीरे तार कंडक्टिविटी बढ़िबो आउटे सेटा कंडक्टर भलिया एक्ट करिया को ट्राई करिवो हला सेमीकंडक्टर एटा बेसिक फैक्ट्स हला सेमीकंडक्टर काहे क्वेश्चन टा न्यूज रे अछि बिकॉज़ सेमीकॉन हेची आ बहुत एने चली चिप मैन्युफैक्चरिंग फॉर वेरियस ईवी पई यूज हो चिप मैन्युफैक्चरिंग आउ इंडिया रे भी ट्राई करा चिप मैन्युफैक्चरिंग करिया को इंडिया ट्राई करछि गोटे ग्लोबल लीडर होबा को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और चिप मैन्युफैक्चरिंग रे ग्लोबल ये रे ऑलमोस्ट सबुटो अधिक प्रोडक्शन आउ टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होछि वियतनाम हला तांकर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हाईली डेवलप्ड हला और चिप इंडस्ट्री भी सेठी बहुत हाईली डेवलप्ड नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ पोलरिस डॉन मिशन स्पेस मिशन एटा पोलरिस डॉन मिशन की ऑब्जेक्टिव्स देछि टू कंडक्ट द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक एटा कहबी मु स्पेस वॉक कोन टू लॉन्च द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट टू मार्स टू टेस्ट फर्दर न्यू लूनर लैंडिंग टेक्नोलॉजीज टू परफॉर्म द फर्स्ट मैन मिशन टू द मार्स तो चारटा स्टेटमेंट देला पोलरिस डॉन मिशन तो चारटा स्टेटमेंट टू कुता ठीक 11C करेक्ट 11C बट 12 को जाओ वेरी गुड 11C 12 को जाओ ट्वेल्व आंसर मु कहि दउ छेडा यार आंसर होची ए टू कंडक्ट प्राइवेट स्पेस वर्क तो बेसिक फैक्ट्स एगुडा हमें देखि दबा पोलरिस डॉन मिशन टा कोन तो पोलरिस डॉन मिशन फर्स्ट तो स्पेस वर्क प्राइवेट स्पेस वर्क नॉर्मल स्पेस वर्क माने कोन स्पेस वर्क माने होची कि स्पेसक्राफ्ट रे साइंटिस्ट माने कि एस्ट्रोनॉट्स माने जिबे स्पेस को तापर से माने से स्पेसक्राफ्ट रु बाहरी की नॉर्मल स्पेस रे से माने मैन्यूवर करिवे माने स्पेस रे बुलिबे से माने ग्रेविटी नाही ऑब्वियसली तो स्पेस रे से माने फ्लोट करिवे तो से स्पेस रे जो फ्लोट करिवे वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करिवे जेमति कि कोठी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिपेयर करिवार अछि कि किछि सैटेलाइट को रिपेयर करिवार अछि से सब जो काम करूछन सेटा को जाउछ हमें स्पेस वर्क जेतेबेले स्पेस रे फ्रीली फ्लोट करी कि मैन्यूवर करी कि वेरियस एक्टिविटीज करूछन सेटा को जाउछ स्पेस वर्क तो एने पोलरिस डॉन मिशन कोन पोलरिस डॉन मिशन इज जॉइंटली कंडक्टेड बाय गोटे होची स्पेस एक्स हला स्पेस एक्स प्लस जैरेड ईस्टमैन ये भी जने गोटे पर्सनालिटी ए दि जण मिसी की प्राइवेट स्पेस वर्क को पोलरिस डॉन मिशन ने कंडक्ट करिया को ट्राई करूछंदी हला जैरेड ईस्टमैन आउ स्पेस एक्स पोलरिस डॉन मिशन कंडक्ट करिया को ट्राई करूछंदी हला तो इन फर्स्ट एति बुझी गले हमें तो हमको आउ गोटे फैक्ट भी जानिया पड़ी फर्स्ट पर्सन जे की स्पेस वर्क करथिले तांको ना कोन 12 रो ए यस करेक्ट 12 रे तो तांको ना होची फर्स्ट पर्सन जे थिले तांको ना होची अलेक्सी लियोनोव हला से गोटे सोवियत सिटीजन थिले हला सोवियत सिटीजन थिले ही वाज द फर्स्ट पर्सन जे की स्पेस वर्क करथिले सल्ला एतिक बेसिक फैक्ट्स ए भितरे जानि था कि जॉट डाउन भी कर दे था लास्ट वाले को रिवीजन करे सहज हो व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स एथरो कोटा फर्स्ट हो सिकल सेल एनीमिया इजी क्वेश्चन एटा जल्दी ट्राई करियो आंसर करियो डाउन सिंड्रोम 3 टा होची हेमोफिलिया 4 टा होची कॉलेरा ऑप्शंस कोन कोन देइची 1 2 एंड 3 1 एंड 3
2 3 and 4 only 1 2 3 4 एथरो आंसर कोडा ए भितरु कोटा जेनेटिक डिसऑर्डर ऑप्शन या दिया यार आंसर कोन 13 आंसर इजी क्वेश्चन एटा बहुत इजी क्वेश्चन बट ट्राई कर आंसर करियो कहना कंफ्यूजन हे पारे कहि दउची यार आंसर होची ए हला सिकल सेल एनीमिया एटा तो जाना अछि म्यूटेशन हुए हला डाउन सिंड्रोम एटा कोन ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम रो ट्राइसोमी नॉर्मल क्रोमोसोम 21 ने केमती थाए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रो एटा बट ट्राइसोमी माने कोन ना 21 पोजीशन ने आउट एक्स्ट्रा थिबो माने तीनटा जाय थिबो जागर नॉर्मल जहा को डाउन सिंड्रोम थिबो तार एमिति थिबो जेतेबेले कैरियो टाइपिंग हमें करबा तार डीएनए मटेरियल को तार क्रोमोसोम को तो हमें एमती पाइबा 21 पोजीशन ने तीनटा थिबो एटा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एटा डाउन सिंड्रोम जहा को थिबो हला एटा भी गोटे जेनेटिक डिसऑर्डर हेमोफिलिया भी गोटे जेनेटिक डिसऑर्डर एटा गोटे कोन ब्लीडिंग डिसऑर्डर हला बट कोलेरा इज अ बैक्टीरियल यस करेक्ट 13 रो कोलेरा गोटे बैक्टीरिया कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी हला बेसिक इजी क्वेश्चन 14th Bavarian Nordic vaccine recently seen in news is related to which of the following disease एतरे बेसिक किछि जानिबार नै ए वैक्सीन ना खाली जानिबार अछि रिलेटेड टू व्हाट या भितरे आ बेसी केमिति काम करछि कोन एते जिंस डिटेल बसिले बहुत टाइम भी लागिवो एबे हम पाखरे सेते टाइम भी नै Bavarian Nordic vaccine is related to what को डिजीज रे रिलेटेड एटा फर्स्ट होची चांदीपुरा वायरस सेकंड होची एम्पॉक्स सी होची लंपी स्किन डिजीज डी होची ट्यूबरकुलोसिस आंसर कौन है यार जस्ट रिलेटेड टू व्हाट यस यस करेक्ट 13 रो है 14 रो आंसर मु कहि दोची एटा प्योर फैक्ट बेस्ड तो एटा होची एम्पॉक्स तो एटा बे ट्रायल फेज रे चलची किछि जगह क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराउ जदि यार एफिशिएंट प्रूव है एटा लार्ज मास स्केल रे प्रोडक्शन कराबो एडमिनिस्टर कराबो टू पीपल हला जानि थो खाली नाडा जानि थिबो डिजीज व्हाट एम्पॉक्स विषय हमें काली भी पढ़छि आज भी पढ़ियो काहे ना एटा कंटीन्यूअसली फॉर मंथ्स इट इज कमिंग इन न्यूज़ तो हमको जानिया को पड़ियो विषय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट phosphoric acid H3PO4 is correct phosphoric acid is primarily used as a key ingredient in urea production second statement India imports phosphoric acid mainly from Morocco Senegal Jordan and Tunisia C hochi phosphoric acid is an organic acid used in the production of polishes and detergents D hochi phosphoric acid is manufactured from sulfuric acid and limestone चारटा स्टेटमेंट देला इथरो करेक्ट कोडा 14 ना 14 डी नुए 14 बी है ना फिफ्टीन आंसर फिफ्टीन आंसर फॉस्फोरिक एसिड यार आंसर होची बी हला फैक्ट बेसिक फैक्ट एगुडा मु फॉस्फोरिक एसिड विषय भी किछि फैक्ट कहबी बट यार एटा होची करेक्ट ऑप्शन माने इंडिया इंपोर्ट करछि फॉस्फोरिक एसिड मोरक्को सेनेगल जॉर्डन एंड ट्यूनिसिया हला जदि गोटे क्वेश्चन आसे गला इंपोर्ट जगह एक्सपोर्ट लिखाई गला ताले तुम जानि छ नाही इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट तो सेति हमको इंपोर्ट करिया को पड़छि तापर आउ बेसिक किछि फैक्ट्स फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ
डैप गोटे फर्टिलाइजर डायमोनियम फॉस्फेट है से तार गोटे मेजर इंग्रेडिएंट होची फॉस्फोरिक एसिड आ फर्टिलाइजर कंजम्पशन इंडिया रे बहुत हाई डैप टा कोन डायमोनियम फॉस्फेट इट इज द सेकंड मोस्ट यूटिलाइज फर्टिलाइजर आफ्टर यूरिया है तो फॉस्फोरिक एसिड यूज होची प्रोडक्शन करिया को डायमोनियम फॉस्फेट जोटा गोटे होची फर्टिलाइजर जानथो बेसिक फैक्ट फॉस्फोरिक एसिड रो यूज कोन हमें इंपोर्ट काई करछे तो अधिक यदि इमते गोटे क्वेश्चन आसी गला तो तुम जानछो इट इज यूज्ड एज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डैप व्हिच इज अ फर्टिलाइजर ओके नेक्स्ट consider the following statement 15c ना 15c नुहे 15 होची b हैला ठीक है चलो किछ ने ट्राई करो पार्टिसिपेट करे ट्राई करो भूल हो ठीक हो शिक्षा को तो मिलिबो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पेजर डिवाइस मोर फर्स्ट क्वेश्चन होची पेजर जो डिवाइस सेटा बहुत न्यूज रे थिला बहुत न्यूज कवर भी करछ एटा कोन पे न्यूज रे थिला एटा तो बहुत बड़े पुराना डिवाइस था बट रिसेंटली एटा बहुत न्यूज रे आस्थिला कोन पे आस्थिला के कोइ पे कमेंट सेक्शन में किछि प्रॉब्लम नै किछि सेमती इशू नै एठु भी तमे बहुत जिंस सिखि कि जानि परिबो बट ट्राई करो पार्टिसिपेट करो भूल हो ठीक हो ट्राई टू पार्टिसिपेट भूल हेले ठीक ता जाने को मिल जिवो किछि असुविधा नै से डिस्करेज होरे किछि नै पेजर कोन पे न्यूज रे थिला क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो पेजर कौन पे न्यूज रे थिला पेजर डिवाइस टा बहुत न्यूज रे थिला बहुत आंसर नहीं आंसर मु तो क्वेश्चन ही पढ़ी नहीं ना आंसर पे व्यस्त नहीं पेजर डिवाइस टा कौन पे न्यूज माने नहीं कि ई स्टेटमेंट आसीबो एग्जाम रे ना अलग किछि आसी पारे तमे जे जानि जो पेजर डिवाइस टा कोन पे न्यूज रे थिला तो तमे से थ्रू ही ऑप्शन रू ही तमे कॉमन सेंस यूज करके आंसर काट दबो पेजर डिवाइस टा न्यूज रे थिला बिकॉज़ रिसेंटली देखिथिबो हिजबुल्लाह ऊपर इजराइल अटैक करथला तो पेजर गुडा ब्लास्ट होतला तो बहुत सारा ताकर टॉप कमांडर्स मानकर डेथ हे जाईची ए पेजर भितरे जो ब्लास्ट टा होतला सेतरे ताकर डेथ हे जाउतला हैला तो एटा इजराइल यूज करथला ए टेक्निक टा रिसेंटली टू किल मेनी हिजबुल्लाह टॉप कमांडर्स ठीक अछि तबे देखिबा स्टेटमेंट कोन पेजर्स आर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कैन रिसीव एंड डिस्प्ले न्यूमेरिक or text messages second hoji unlike cell phones pager device depend on radio signals to transmit information तो एथरो कु स्टेटमेंट करेक्ट one only two only both one and two neither one nor two यार आंसर 16 रो सी हैला बोथ वन एंड टू तो नॉर्मल फोन यूज हवा पूर्वरु फोन तो मोस्टली कोन पे यूज हुए ना सेटा जति के फोन यूज करू जे स्मार्टफोन यूज करू सेटा बहुत इजीली हैक करी हे जिवो कि माने सीक्रेट एजेंसीज माने सेटा को ट्रैक कर देबे बट पेजर्स को ट्रैक करबा कष्ट आ एटा मोस्टली एमिति सिक्योर्ड कम्युनिकेशन यूज करा जाय तो पेजर्स आर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट रिसीव एंड डिस्प्ले न्यूमेरिक और टेक्स्ट मैसेज तो एलाबोरेट मैसेज करी होबनी जेमि हम फोन रे करूचे बट जेति काम रिक्वायर्ड मैसेज हमें कर परिबा सेथरे अनलाइक सेल फोन्स पेजर डिवाइस डिपेंड ऑन रेडियो सिग्नल्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन हैला तो कम्युनिकेशन डिवाइस बड़े यूज करा जाय नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिग्नल मॉड्यूलेशन इज और आर करेक्ट सिग्नल मॉड्यूलेशन विषय पचर्छ हैला फर्स्ट स्टेटमेंट होची मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरिंग अ कैरियर सिग्नल इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन basic statement gote in amplitude modulation AM the frequency of the carrier wave is varied according to the message signal third statement in frequency modulation FM is a more resistant
to noise compared to amplitude modulation ए भितर को स्टेटमेंट टा करेक्ट पचारछि करेक्ट स्टेटमेंट हाँ ए होची 1 and 2 only, B होची 1 and 3 only, C होची 2 and 3 only, D होची 1 2 3 16 C yes correct very good 16 ର C आंसर nice 17 ର आंसर मोस्टली 17 रो क्वेश्चन कांसेप्ट होची एएम और एफएम विषय से पचार जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करछे हमें जो रेडियो सुनछे एएम रे सुनछे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सुनछे एफएम भी सुनछे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी सुनछे तो सही विषय से कंपैरिजन करके पचारछि तो एथरु को स्टेटमेंट करेक्ट 17 रो यस करेक्ट 17 रो बी तो यार कांसेप्ट कोन ना सिग्नल मॉड्यूलेशन करा जाए तो कोन जिंसटा कोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ना रू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी की हमें एम्पलीट्यूड टा को मॉड्यूलेट करूचे टू ट्रांसमिट आवर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल कोन ना हमें गीत सुनछे सेतरे नले किछि रेडियो न्यूज़ आसुची कि नले किछि इनफॉरमेशन ब्रॉडकास्ट करियार अछि से सब जिंस हम केमति करछे एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करी तो ता ना होचे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफएम टा कोन वेव रे कोन गोटे एम्पलीट्यूड अछि गोटे फ्रीक्वेंसी अछि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम देखि देले बट एफएम रे कोन ना फ्रीक्वेंसी को हम मॉड्यूलेट करछे हमर इनफॉरमेशन टा को ट्रांसमिट करिया हला और एटा मोर एफिशिएंट बिकॉज़ एथरे डिस्टॉर्शन बहुत कम एफएम रे बेसी क्लैरिटी सहित हम इनफॉरमेशन को ट्रांसमिट करि पकेरा बिकॉज़ एथरे डिस्टॉर्शन बहुत कम हुए तो एफएम इज मोर बेटर देन एम इन ट्रांसमिशन ऑफ information. Next 18. Consider the following statement with reference to Venus. Venus विषय आसला मु पूर्व कहि दै छी आ विषय it is the hottest planet in our solar system. 2 होची Venus orbiter mission will be India's first interplanetary mission. Which of the statement given above is or are correct? दीटा स्टेटमेंट दै छी Venus विषय कोटा करेक्ट मु जानियार अछि A होची 1 only 2 only both 1 and 2 neither 1 not 2 आंसर कोन 18 नंबर क्वेश्चन सेवेंटीन बी यस करेक्ट वेरी गुड 18 आंसर एटीन जल्दी एटा इजी क्वेश्चन टाइम वेस्ट करिया नै कहि दउ छमु फर्स्ट स्टेटमेंट तो मु ऑलरेडी बुझे देई छी पूर्वरु हॉटेस्ट प्लैनेट एटा ठीक कारण बिकॉज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सेठी बहुत कोन हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट हुए तो टेंपरेचर बहुत अधिक था इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट करेक्ट वेनस ऑर्बिटर मिशन विल बी द इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन हैला जोटा कि हम आगु को वेनस शुक्रयान लॉन्च करिया को जाउ छ हमें तो सेटा वेनस ऑर्बिटर मिशन से कहै छी कि इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन नुह एटा भूल स्टेटमेंट बिकॉज़ ऑलरेडी इंडिया गोटे लॉन्च करि सारछि कोन मॉम सक्सेसफुली लॉन्च हे सारी तो दिस वाज द फर्स्ट मिशन हैला फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन दिस वाज द फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स को लॉन्च कराइतला मार्स ऑर्बिटर मिशन हैला तो इथरो को स्टेटमेंट करेक्ट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स तो आंसर ए हैला 18 19th क्वेश्चन को जिवा ठीक अछि ओके 19th क्वेश्चन देछि कोन द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस विल बी लॉन्च्ड इन 2028 and by 2025 the fully operational indigenous space station will be created भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विषय स्टेटमेंट गोटे देछि हला करंटली द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द ओनली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन एथरो करेक्ट स्टेटमेंट कोटा कि एटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एटा की आंसर दे परियो
एथरे बहुत सारा फैक्ट्स अछि मु भी कहि देबी बट ए यार आंसर के दे परियो 19 19 आंसर 19 आंसर ट्राई करो करेक्ट वेरी गुड 19 आंसर ए फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेल्फ एस्टिमेटेड 2028 गोटे मॉड्यूल लॉन्च करा देन धीरे धीरे मॉड्यूल लॉन्च करा हेगी बाय 2035 फुली ऑपरेशन कराई जिवो नेक्स्ट करंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस इज द ओनली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन एटा भूल स्टेटमेंट बिकॉज एबे न्यूज रे कोन थिला चाइना निजर स्पेस स्टेशन बनौछि चाइना रो स्पेस स्टेशन ना कोन तियांगोंग हला तियांगोंग स्पेलिंग टा मत एते क्लियर नहीं बट दिस वन इज तियांगोंग हैला एटा चाइना रो तो चाइना ऑलरेडी तार स्पेस स्टेशन टा को लॉन्च करि सारलानी तार ना होची तियांगोंग तो एबे खाली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाही आ गोटे भी स्पेस स्टेशन अछि चाइना रो जोटा होची तियांगोंग हैला यस करेक्ट तो मते एने कुह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एटा किए समस्त मिसी की बनै थिले इंटरनल स्पेस स्टेशन जोटा कि बहुत दिन रो अछि स्पेस रे तो किए सब मिसी की एटा बनै थिले बेसिक फैक्ट्स ए सब जिंस जानिया को पड़िबो रिवीजन रे बेसिक्स की माने जो फाउंडेशन जिंस रे एडा सब पढी दिबो तमे आईएसएस किए मिसी की बनै थिले ट्राई करो कमेंट सेक्शन आंसर करिया को नले मु कहि देबी अल्टीमेटली आईएसएस फर्स्ट तो यूएसए हैला रशिया देन के यूरोप कनाडा आउ जापान हाँ ट्राई करो हैला एमाने सब मिसी की ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टा को बनै थिले रशिया यूरोप कनाडा जापान ओके आ गोटे कंट्री चाइना हैला चाइना एने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रो एग्जिट नवा को चाहूची बिकॉज से तारा निजर स्पेस स्टेशन बनै देछि तो एथरु देखो इंडिया यार पार्ट नथिला बट इंडिया यूज करे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ठीक अछि चलो एति बेसिक फैक्ट्स जानि थाओ जॉट डाउन कर दी थाओ यदि एमती कुछ स्टेटमेंट आसला फैक्ट बेस तो एटलीस्ट जानि थिबो नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट तो एटा गोटे टेलीस्कोप कहू गले बहुत गोटे बड़ टेलीस्कोप हैला गोटे प्रोजेक्ट it is not a single telescope but an array of thousands of antennas to be installed in remote radio quiet locations second statement hochi organizations from 5 countries are members of square kilometer array project including India which of the statement given above is or are correct dita statement dela ithru correct kuda pacharla 20 ro answer kon yes USA Japan Russia Europe चाइना कनाडा सब यार आंसर कौन नहीं 20 आंसर होची ए हला एटा ठीक इंस्टॉल्ड इन रिमोट रेडियो क्वाइट लोकेशंस तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो स्पेस में अछि ताकू माने कैप्चर करिया को एनालिसिस करिया को इस
ए जिनसटा बना होची रेडियो किलोमीटर रे एटा हैला थाउजेंड्स रे आ एटा मल्टीपल लोकेशंस रे बना होची हैला मल्टीपल लोकेशंस गोटे होची साउथ अफ्रीका आ गोटे ऑस्ट्रेलिया बेसिक फैक्ट्स आ विषय में कहूची ऑस्ट्रेलिया रे बना होची आ रे हेडक्वार्टर होची कोडी यूके हैला हाँ यार हेडक्वार्टर होची यूके रे हैला और 5 कंट्रीज नुए 14 कंट्रीज एतरे पार्टिसिपेट करछन हैला बेसिक फैक्ट्स एटा 5 नुए 14 इंडिया भी गोटे पार्ट 14 बेसिक फैक्ट्स स्क्वायर किलोमीटर एरिया विषय जानि था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंफ्रासाउंड infrasound refers to sound waves with frequencies below 20 hertz which are generally not detectable by the human ear हैला second statement जो infrasound can be used to detect natural phenomena like earthquakes and volcanic explosions as well as man-made events like nuclear explosions infrasound विषय बेसिक पचारची फैक्ट्स जेडा देइची तयार आंसर कोन करेक्ट स्टेटमेंट पचारची इजी क्वेश्चन है एटा ट्राई कर आंसर करियो 21 रे आंसर हाँ 20 रो ए 21 रे आंसर कोन 21 आंसर इजी क्वेश्चन डाटा 21 आंसर होची सी हला बोथ 1 एंड 2 तो बेसिक इंफ्रासाउंड विषय पढ़ले बट ह्यूमन ईयर रो केते रेंज सुनी परिवार साउंड रेंज रो केते फ्रीक्वेंसी भितरे ह्यूमन मन से सुनी परिबे ह्यूमन मन तो सेटा होची 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हला एटा होची हमर ऑडिबल रेंज एति भितरे जे साउंड थाउची हमें सुनी परिबा ताकू माने एनालाइज कर परिबा प्रोसेस कर परिबा सुनी परिबा इंफ्रासाउंड हमें सुनी परिबानी और अल्ट्रासोनिक साउंड भी हमें सुनी परिबा हला अल्ट्रासाउंड जोटा होची सेटा हमें सुनी परिबानी और इंफ्रासाउंड टा भी हमें सुनी परिबानी एगुडा के यूज करंती वेल यूज करंती ए जो अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड एटा कम्युनिकेट करियो की यूज करंती एलिफेंट माने भी यूज करंती वेल माने यूज करंती डॉल्फिन्स माने भी यूज करंती हला तो से माने यूज करंती कम्युनिकेट करिया को निज भीतर बेसिक फैक्ट्स एवढा जान था 21 सी दीटा जाग ठीक हैला नेक्स्ट 22 which of the following statement is correct regarding dengue fever विषय पचार dengue outbreak तो होची माने periodically होची देखुचे हमें it is also known as breakbone fever it is common in tropical and subtropical climates dengue is treated with pain medicines as there is no specific treatment currently एथरु को स्टेटमेंट ठीक dengue विषय बेसिक ट्रीटमेंट एटा तो गवर्नमेंट भी अनाउंस करची सुनथिबे सब तरह डेंगू विषय केमती को डेंगू को प्रिवेंट करियो कोन कोन सिम्पटम्स थिले डॉक्टर को देखायर अछि हला एथरु कोटा करेक्ट 22 रो आंसर करेक्ट वेरी गुड सुनील कुमार वेरी गुड 22 रो डी आंसर करेक्ट
ऑल दी अबव। तो डेंगू विषय बेसिक फैक्ट कौन एटा गोटे वायरल डिजीज है। ब्रेक बोन फीवर या कहा जाए बॉडी एक एथरे बहुत अधिका हुए बॉडी पेन बहुत अधिका हुए और बॉडी रे न्यूट्रोफिल काउंटटा कमी जाए है। यूजुअली जो पर्सन को डेंगू हुए यूजुअली से माने मोस्ट सिम्पटम्स देखानी फीवर हुए बट बॉडी पेन ठीक है बट दे आर सेल्फ ट्रीट माने सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट थाए बॉडी रे जदी किछि इशू होचे ताको सिम्पटोमेट को ट्रीट करियो पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करिया को सेमति किछि मेडिसिन नाय सेल्फ हीलिंग थाए एटा जस्ट खाली हमको सिम्पटम को ट्रीट करिया थाए। बॉडी पेन बहुत हुए जदि ब्लड टेस्ट करा जिवो बॉडी रे बहुत टाइम न्यूट्रोफिल काउंट कमियार देखिया को मिले माने गोटे पेस गोटे रैपिड पेस रे न्यूट्रोफिल काउंट बॉडी रो कमी चले हैला। तो सेमिति केस रे हमको न्यूट्रोफिल टा को बाहर दवा को पड़ियो। कंसीडर तापर 23rd क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बॉडी राउंडनेस इंडेक्स हैला। एटा गोटे सोमाटोटाइपिंग मेजरमेंट टाइप रो यूज करा जाय बॉडी रो फैट परसेंटेज कैलकुलेट करिया को हैला। BRI was developed by Diana Thomas in 2013 what a basic fact based BRI mathematically quantifies body fat levels by looking at height and weight which of the statement given above is or are correct। BRI विषय पचारछि 23 आंसर के कहि परिबो 23 रो आंसर 23 रो आंसर होची ए हला गोटे फैक्ट जोटा थिला सेटा नहीं 23 आंसर होची ए हला वन ओनली मु कहि दोची जिंस फैक्ट बेसिक फैक्ट ए विषय बॉडी राउंडनेस इंडेक्स आउट आपण सुनिथिबे कोन बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स सेटा कोन करे बॉडी रो फैट परसेंट से बीएमआई हमर नंबर तार गोटे पर्टिकुलर नंबर थाए सेही रेंज भीतर थिले पर्सन नॉर्मल अछि नले कि गोटे मालनरिश्ड अछि जदि एति पर्टिकुलर नंबर तळुक अछि जदि सेही नंबर अधिक अछि देन वी क्लासिफाई हिम एज ओबेस और सिवियरली ओबेस हैला। तो सेटा होछि कोन बीएमआई सेटा कोन करे हमर हाइट आ वेट को यूज करके कैलकुलेट करे फैट परसेंटेज को हैला हम पर्टिकुलर हाइट और वेट रे बॉडी रे एति फैट थिबा दरकार हैला। तो सही कैलकुलेशन करके हम बीएमआई कैलकुलेट करलो बीआरआई टा कोन एटा मोर एक्यूरेट देन बीएमआई हैला। तो एबे एटा रिसेंटली यूज करिवार केते जगह स्टार्ट करा हिची एथरे से कोन करंती ना हाइट आ वेस्ट सर्कमफेरेंस को यूज करके हम फैट परसेंटेज टा कैलकुलेट करंती आ एटा यूजुअली मोर एक्यूरेट देन बॉडी मास इंडेक्स जोटा को हम बीएमआई कहउचे हैला बेसिक फैक्ट। 24 with reference to the non-communicable diseases NCDs consider the following statements these are result of combination of genetic physiological environmental and behavioral factors okay basic statement gote dela aging rapid unplanned urbanization and globalization are among the factors contributing to rise of NCDs hela which of the statement given above is or are correct dita statement deichi with reference to the non-communicable NCDs भितर दीटा स्टेटमेंट देछि एटा होछि गोटे रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स सेकंड स्टेटमेंट होछि एजिंग रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर अमंग द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द राइज ऑफ NCDs हैला व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बेसिक स्टेटमेंट एटा बहुत इजी क्वेश्चन यार आंसर दाको ट्राई करो करेक्ट पचारछि वन ओनली टू ओनली बोथ 1 and 2 डी होछि नाइदर 1 nor 2 24 रो आंसर एटा बहुत इजी क्वेश्चन टा से बेसी टाइम वेस्ट करबा ना हमें एटा होची बहुत 1 and 2 हला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काहे एते न्यूज रे अछि बिकॉज़ इट इज वन ऑफ द मेजर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द होल वर्ल्ड हला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रे कोन आछि कैंसर आछि डायबिटीज आछि वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेस आछि लाइक डिप्रेशन अलग किछि लाइफस्टाइल डिजीज होछि हला ए सब जिंस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रे आछि एटा बहुत
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एथरे बहुत डिजीज कवर होची वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड एनसीडीज और इंडिया रे भी इंडिया रे जानछो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट डायबिटीज पॉपुलेशन इंडिया रे हला तो यार कोन मल्टीपल इंटरेक्शन कॉम्बिनेशन मल्टीपल फैक्टर होची फिजियोलॉजिकल जेनेटिक कॉज भी रहउची बहुत टाइम रे डायबिटीज रो कोन डायबिटीज मेलेटस जो होची तार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रहउची लाइफस्टाइल भी रहउची जेनेटिक कॉज भी रहउची डायबिटीज रो हाइपरटेंशन भी सेमती हला तो एनवायरमेंटल फैक्टर अधिक स्ट्रेस रे रहउछनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स एनवायरमेंट हमर बहुत स्ट्रेसफुल रहउची तो कोन होची हाइपरटेंशन देखा जाउची एंड बिहेवियरल फैक्टर्स ह्यूमंस माने को जेमती बिहेवियर होची से अनुसार बहुत सारे डिजीज खाइबा जेमती डाइटरी इनटेक खाइबा को नेकी बहुत सारे डिजीजेस होची लाइफस्टाइल डिजीजेस हला तो सेटा होची बिहेवियरल फैक्टर्स एजिंग रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर अमंग द फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन पे कोन होची फास्ट फूड कल्चर हला among the factors contributing to non-communicable diseases basic question eta easy ta kichi etre time waste kariya nahi consider the following statement plaques are bright regions in the chromosphere eta sun ro structure bisare koichi se plaques are bright regions in the chromosphere network cells are slightly larger than sunspots and have weaker magnetic fields hala netti ra देखो plaques जदी एटा गोटे गोटे टर्म भी आसे गला plaques network cells कने सेल्स लागुची त हमक लागिबा आ कोन जिंस थिबो नाही प्लेक्स नेटवर्क सेल्स आर एसोसिएटेड विथ सन्स क्रोमोस्फियर माने सन रो जो बाहर एटमॉस्फियर अछि सन रो सरफेस अछि सेठी एसोसिएटेड अछन ए तीटा टर्म हला प्लेक्स आर ब्राइट रीजन्स इन द क्रोमोस्फियर नेटवर्क सेल्स आर स्लाइटली लार्जर देन सनस्पॉट्स एंड हैव वीकर मैग्नेटिक फील्ड्स तो ए तीटा भीतर स्टेटमेंट करेक्ट कोटा 25 कोई दूचे एटा मु बोथ 1 and 2 तीटा जाक स्टेटमेंट करेक्ट हला तो सन रो एटमॉस्फियर क्रोमोस्फियर फोटोस्फियर रे कोन थौची बहुत सारा रिएक्शन होची फ्यूजन रिएक्शन होची तो सेठी कोन हीट भी जनरेट होची मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होची हला सन स्पॉट्स भी अछन जोटी मैग्नेटिक फील्ड रिलो सेमिति सन स्पॉट्स बोले प्लेक्स भी अछंती ब्राइट रीजन्स इन द क्रोमोस्फियर बहुत ब्राइट गोटे पर्टिकुलर जगह बहुत ब्राइट स्पॉट हमको देखा जिवो तो सेडा होची प्लेक्स नेटवर्क सेल कोन स्लाइटली लार्जर देन सनस्पॉट्स मु कहली एने जोटी कि मैग्नेटिक फील्ड हीट बहुत जनरेट होची मैग्नेटिक फील्ड्स टिके कम जनरेट होची हला सनस्पॉट्स एंड हैव वीकर मैग्नेटिक फील्ड्स हला नेटवर्क सेल सिम्पली टाइप रो जोटी गोटे वीकर मैग्नेटिक फील्ड्स अछि 26 25 C both 1 and 2 okay 26 को जिबा Meta recently unveiled Orion a prototype augmented reality glasses which of the following statement regarding augmented reality and virtual reality दीटा जिंसो emerging technology रे एटा बहुत बड़ा हुए augmented reality virtual reality VR AR हैला are correct augmented reality integrates digital information into physical world in real time whereas virtual reality creates a completely simulated environment हैला next second statement hochi AR devices are typically equipped with cameras sensors and displays to capture and overlay digital content onto real surrounding हैला real world surrounding third statement hochi in both AR and VR the physical world is completely shut out during user interaction select the correct answer using the code given below जदि AR और VR भितर डिफरेंस जहा थिबो ए क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हि जिवो यार आंसर के दे परिबो 26 रा आंसर AR VR डिफरेंस जना थिले 26 आंसर बहुत इजीली हे जिवो एथरे AR VR कांसेप्ट भी रिवीजन हे जिवो आंसर होची बी हला मु कहि दोचे एने AR VR कोन
सिंपल रे बुझे दूची एआर वीआर माने कोन होची वर्चुअल रियलिटी माने कोन कंप्लीट एनवायरनमेंट रे हमें शटडाउन हे हमें किछि गोटे डिवाइस पिंदिबा आखि रे हैला जोटा कि वेरियस कंपनीज माने वर्ल्ड ये रे रिलीज करूछनी वर्चुअल रियलिटी माने कोन हमें गोटे किछि डिवाइस पिंदिबा और हमें कंप्लीटली शटडाउन हे आउटर एनवायरनमेंट हम सेट गोटे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम क्रिएट हे सेटा होची वर्चुअल हैला वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी माने हमें ए एनवायरनमेंट रे रहिबा आ आम सामने रे गोटे वर्चुअली किछि गोटे जिंस ऑगमेंट होबो माने सेटा नेचुरली प्रेजेंट नाही बट हमको सेटा सी जगह रे देखा जाउथबो हैला हमें ई फिजिकल वर्ल्ड रे रहि कि से जिंसटा को देखि परिबा सेटा होची ऑगमेंटेड रियलिटी हैला ए गोटे गेम बाहर थिला पोकेमोन गो बोलिया सेटा होची ऑगमेंटेड रियलिटी यूज करथिला हमें नॉर्मल आखिरे देखिले किछि देखा जीवनी से जगह रे अछि बट यदि फोन वाया फोन हमें कैमरा रे देखिबा सेठी किछि गोटे जिंस ठिया हिच सेटा होची ऑगमेंटेड रियलिटी हैला बेसिक एग्जांपल ले ट्राई करो बुझिया को बुझे जो तो एआर और वीआर डिफरेंस होची सेया हैला तो 1 टा ठीक 2 टा ठीक 3 टा कोन इन बोथ एआर एंड वीआर द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट अप एट स्टेटमेंट टा भूल ना वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटली शट अप होबो बट ऑगमेंटेड रियलिटी तो हमें कंप्लीटली शट डाउन होने ना हमें एनवायरनमेंट रे देखुचे हम सामने रे होची पोकेमोन गो एग्जांपल मु देली जो गेम टा मजरे आस्तला हैला 27 बुझिएला एआर वीआर डिफरेंस टा बेसिक जानि थाओ अलग किसी स्टेटमेंट ऐसे जदी जानि छ एआर और वीआर कोन देन किछि भी स्टेटमेंट आसीबो तो मैं आंसर कर दबो 27 ठीक अछि 27 को जिबा In cadaver donation, a person donates his entire body to science instead of individual organs after death. ठीक अछि. The world's first successful organ transplant was kidney transplantation undertaken at AIIMS, New Delhi. एथरो बेसिक डेटा फैक्ट मु कहि दोची ए क्वेश्चन आंसर कैडावरिक डोनेशन माने कोन समने जानथिबो नॉर्मल ऑर्गन डोनेशन करा जाय आई डोनेट करा जाय किडनी डोनेट करा जाय लिवर डोनेट करा जाय एटा कह जाय ऑर्गन डोनेशन कैडावरिक डोनेशन माने कोन ना पर्सन डेथ पर से निजर होल बॉडी को डोनेट कर दियंती फॉर व्हाट फॉर अ ग्रेटर गुड कॉज फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टूडेंट्स जो माने अछंदी जो माने फर्स्ट ईयर एनाटॉमी क्लास अछि फर्स्ट ईयर रे गोटे सब्जेक्ट अछि एनाटॉमी तो सेठी कोन हुए ना कैडावरिक डिसेक्शन हुए तो सेही डिसेक्शन परफॉर्म करे को कोन दरकार कैडावर दरकार ताकि से माने सिखि परिबे कैडावर ऊपर जदी सिखिबे देन जदला हायर जिबे ऑन फील्ड जिबे देन रियल ह्यूमन बीइंग ऊपर से माने किछि गोटे ऑपरेट करि परिबे तो से कैडावरिक डोनेशन सेहित पय जो मेडिकल एनाटॉमी हॉल रे जो डेड बॉडीज मानन को प्रिजर्व करा जाय ता से मानन को कैडावर को जाय ताको प्रिजर्व करि रखा जाय हैला ताको कैडावर को जाय तो सेटा को कहा जाय कैडावर डोनेशन फुल बॉडी को डोनेट कर दबा नेक्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाज किडनी ट्रांसप्लांट अंडरटेकन एट एम्स न्यू दिल्ली ए स्टेटमेंट टा कोन ए स्टेटमेंट ठीक अछि वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाज किडनी हां किडनी ट्रांसप्लांट हेतला बट इट वाज नॉट अंडरटेकन इन एम्स न्यू दिल्ली इट वाज अंडरटेकन इन कोडी ट्राई करो यस जज एम्स न्यू दिल्ली नो पीटर ब्रिंगम हॉस्पिटल इन बोस्टन हैला बोस्टन रे फर्स्ट कराइतला और इंडिया रे फर्स्ट कोडी कराइतला किडनी ट्रांसप्लांट एटा सीएमसी वेलोर तमिलनाडु रे हेतला सीएमसी वेलोर हॉस्पिटल रे इंडिया रे फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट कराइतला बेसिक फैक्ट्स जानि था फोवस एंड डिमोस आर द मून्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स यार आंसर कोन एटा तो पूरा बेसिक क्वेश्चन 28 आंसर द बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन कहि दोछि मु फैक्ट क्वेश्चन एथरा जानिबार कोन अछि जानि थाओ दीटा मून अछि तार होछि मार्स होछि कोन रेड प्लैनेट हैला मार्स इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट चलो जल्दी अब बेसी टाइम वेस्ट करियो जोडा इजी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मार्बर्ग वायरल डिजीज हैला इट इज अ severe highly infectious hemorrhagic fever similar to ebola that belongs to
पाइलोवायरस फैमिली है। The natural host of the Marburg virus are the African green monkeys. C होची the virus was first identified in 1967 in Germany. तो से पचारची ए भितरु 29 क्वेश्चन टा होची करेक्ट स्टेटमेंट ए भितरु कोडा। और डी टा होची these are currently there is currently no approved vaccine for antiviral treatments. Not correct, sorry, भूल स्टेटमेंट आमु काढिबार अछि ए भितरु कोडा। तार आंसर कोन 29 रो 28C. Yes, correct, very good, 28C. अनुपम पोहा करेक्ट 28C, ठीक, वेरी गुड। मार्बर्ग वायरस यार आंसर होची बी हैला। बी स्टेटमेंट होची भूल से पचार हम भूल स्टेटमेंट काढे बी स्टेटमेंट भूल। यदि बी स्टेटमेंट भूल से कोन देछि मार्बर्ग वायरस आर दी ग्रीन मंकीज हैला। नेचुरल होस्ट होची तांकर कोन अफ्रीकन ग्रीन मंकी ना। यार आंसर होची 29 बी, यस करेक्ट। यार आंसर होची अफ्रीकन फ्रूट बैट हैला। नेचुरल होस्ट होची नै माने करे अफ्रीकन फ्रूट बैट। जानी था जदि होस्ट पचारला स्टेटमेंट दे देला देन आंसर करिए जिवो अफ्रीकन फ्रूट बैट। आ एटा ट्विन सिस्टर ऑफ इबोला भी कहले हबो बिकॉज़ सिम्पटम्स बहुत समान था इबोला संगे हैला। आ एटा फर्स्ट देखा जायतला जर्मनी रो गोटे सिटी अछि मार्बर्ग सेठी, तो सेठ पे ता ना दियाला मार्बर्ग वायरस हैला। बेसिक फैक्ट्स सरला पार्ट 4 सरला। एबे हमें 5 मिनिट्स ब्रेक नबा, ठीक अछि। 5 मिनिट्स ब्रेक। टाइम केतरा हला 12:15 12:20 रे हमें रिटर्न करबा। केतरा रे 12:20 स्टार्ट करबा पार्ट 5 हैला। बुझियला एतिक मन पार्ट 4 रो सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन बुझियला इंपोर्टेंट फैक्ट्स गुडा कमेंट सेक्शन रे ट्राई करो टिके कहया को। 5 मिनिट्स ब्रेक 12:15 12:20 रे रिटर्न करबा।
वेलकम एवरीवन स्टार्ट करिए ट्राई करिए स्पीड स्पीड करिया को ताकि बेसी टू बेसी कवर कर परिया बेसी करंट अफेयर्स हमें कवर कर परिया आपण मानको भी फायदा सेथिरे ओके स्टार्ट करिए हला पार्ट 5 consider the following statement with reference to fluorescent nanodiamonds हला fluorescent nanodiamond विषय से पचारछि then nanometer size diamonds made on carbon nanoparticles produced in high temperature and high pressure FNDs are stable under light and are not toxic to living things. Which of the statement given above is or are correct? Fluorescent nano diamond विषय पचारछि nanoparticle fluorescent nano diamond विषय पचारछि से दीटा स्टेटमेंट देछि एति पचारछि which of the above statement are correct यार आंसर कोन होबो बेसिक क्वेश्चन कॉमन सेंस यूज करके आंसर करिवो आ सब जिंस जानि थिबो बोली माने नै सेमती हेई परिबोनी काहे एवरी 1 सेकंड किछुडे नुवा करंट अफेयर आसुची किछुडे नुवा साइंटिफिक रिसर्च होउची साइंटिफिक न्यूज आसुची सब जिंस हम जानि थिबो बोली माने नै बेसिक कॉमन सेंस यूज करके आंसर करिया ट्राई करिवो एग्जाम होले भी सही करिया ट्राई करिवो एर आंसर कोन 21 सॉरी 21 कोची 1 रा आंसर कोन वन आंसर होची सी हला बोथ 1 एंड 2 बेसिक कॉमन स्टेटमेंट कॉमन सेंस यूज करके नैनो डायमंड्स आर्टिफिशियली बना होची नैनो डायमंड्स तो केमिति डायमंड नेचुरल प्रोसेस रे केमिति बनाबे हाई प्रेशर दरकार और हाई टेंपरेचर ही नेचुरल डायमंड फॉर्मेशन सेमिति हम आर्टिफिशियल डायमंड यदि बनाय ट्राई करिया हमको हाई टेंपरेचर दरकार हाई प्रेशर दरकार हला और डायमंड ता गोटे स्टेबल एलिमेंट गोटे स्टेबल सब्सटेंस तो सेटा यूज इन लिविंग थिंग्स मेडिकल ये रे भी मेडिकल फील्ड रे बहुत जगह डायमंड यूज करा जाय बिकॉज़ they are not toxic है सही पे next which of the following statement is not correct regarding human immunodeficiency virus HIV विषय रे पचारछि से and acute immunodeficiency syndrome AIDS विषय रे पचारछि हैला फर्स्ट दोची AIDS is a term that applies to the most advanced stages of HIV infection हैला HIV is not spread by kisses hugs and sharing food. C होची there is no cure of AIDS till now. D होची none of the above. Statement basic NCERT रे भी अछि बहुत जगह रे न्यूज रे भी पढुथिबो आर्टिकल्स आसुची तो एजेंसीडर पचारची करेक्ट स्टेटमेंट कोडा not correct regarding HIV. नॉट करेक्ट माने भूल स्टेटमेंट इथरु हमको तीनटा भीतर भूल स्टेटमेंट काढिबार अछि के कहि परिबो आंसर कोन 2 रो ट्राई करो पार्टिसिपेट करिया को ट्राई करो कोन 2 रो आंसर डी हैला एड्स होची कोन एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एचआईवी होची इन्फेक्शन एचआईवी टा होची वायरस हैला एचआईवी टा होची वायरस जोटा कि इन्फेक्ट करे ऑर्गेनिज्म को तापर धीरे धीरे इन्फेक्ट करे एचआईवी रो एम्ति निजरो किछि सिम्पटम्स नसा एटा हमर कोन करे ना हमर इम्यूनिटी सिस्टम को धीरे धीरे कहा पर अटैक करे हमर व्हाइट ब्लड सेल्स ऊपर जो माने कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करछन तो तांका नंबर धीरे धीरे कमी कमी चले CD4 सेल्स तांका नंबर को ये करी कि हमें देखि पारु कि एचआईवी टा केते प्रोग्रेस करी जेते बेले
एचआईवी टा एते गोटे लेवल को पळेबो आमे इम्यूनिटी को एते सप्रेस कर दबो सेते बेले गोटे लेवल आसीबो आमे पूरा ससेप्टेबल हे जिवा किछि गोटे नॉर्मल गोटे फीवर की किछि गोटे नॉर्मल इन्फेक्शन हेले भी सेटा हमको बहुत बड़ वे रे इंपैक्ट पकेबो सेही स्टेज को कहै जे एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम माने सेथरे हमर इम्यूनिटी सिस्टम टा पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड हे सारलानी एचआईवी टा बहुत एडवांस स्टेज को पळेलानी माने से वायरस टा बहुत रैपिड रेट रे हम बॉडी रे एचआईवी वायरस टा रैपिड रेट रे हम बॉडी को बॉडी रे ग्रोथ कर सारलानी और इम्यूनिटी को हमर बहुत सप्रेस कर सारलानी सेही स्टेज को कहै जे एक्यूर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हैला अप्लाइज टू द मोस्ट एडवांस स्टेज कोन कहली से ही एडवांस स्टेज होची ताको कहै जे एड्स हैला HIV is not spread by kisses, hugs and sharing. It is spread केमती हुए ना various fluids of human for blood हैला semen, vaginal fluids ये सब fluid रे ही HIV virus टा spread करे. Normally मिति kisses, hugs and sharing रे spread करे नहीं. There is no cure for AIDS till now. इटा ठीक कथा है बे cure नहीं बहुत clinical trial चली ची but absolute गोटे cure एपन तो नहीं हैला तो सब जाक statement ठीक तो आंसर होची D हैला D. Correct. Very good. Next, consider the following statement. Pluto was classified as a dwarf planet in 2006 after the discovery of other similar objects in Kuiper belt. Hela. Charon is a Pluto's largest moon and they engage in unique orbital dance where both bodies rotate around a central point, making them resemble a double dwarf planet system. है प्लूटो विषय किसी स्टेटमेंट देछि तो ए स्टेटमेंट भितर कोटा करेक्ट हमको काढियार अछि करेक्ट स्टेटमेंट काढियार अछि यार आंसर के कहि परिबो 3 रो तापर मु टिके बुझाई देबी फर्दर हम प्रोसीड करियो ट्राई करो 3 रो आंसर यार आंसर होची सी हला बोथ 1 and 2 बुझे भी कौन हो क्यूपर बेल्ट डिस्कवरी ऑफ अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन द क्यूपर बेल्ट जो अच्छी हमरो नॉर्मल जो सोलर सिस्टम अच्छी ता बाहर गोटे क्यूपर बेल्ट अच्छी है तो सेठी अदर प्लैनेट सिमिलर टू प्लूटो अच्छी सेठ में प्लूटो को हमें ड्वार्फ प्लैनेट कर देले है और चेरोन इज एटा जानता चेरोन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ कहार प्लूटो बेसिक फैक्ट ए थ्रू ही हम क्वेश्चन रू हमको पिकअप कर दबार अछि स्टेटमेंट आसला हमें आंसर कर दबा है आ गोटे जिनस मत बुझेबार थिला तुम मानक आम बहुत थर देखिले L1 आदित्य L1 मिशन L2 मिशन L1 L2 L3 L4 L5 ये जिनस गुड़ा कौन तार लोकेशन कोठी L1 कहीदेला माने तो लोकेशन आम कोठी बुझिबा तो बेसिक जानी था एटा एते थोड़ा न्यूज रे आसलानी हुए तो ए थ्रू ही पचार दियंती कि बेसिक L1 L2 L3 पॉइंट कोन पॉइंट रो सिग्निफिकेंस ए पॉइंट रो कोन ना L1 लैंग्वेज पॉइंट गोटे एमिति पॉइंट जोठी कि सन और अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट निजो को बैलेंस कर दोछन हैला तो माने सेठी हम जदी गोटे स्पेसक्राफ्ट को रखिबे हमको मिनिमम फ्यूल यूज करिया को पड़िबो से स्पेसक्राफ्ट को से जगह रे पोजीशन करबा को काहे ना ग्रेविटेशनल पुल ऑपोजिट डायरेक्शन रे ये कर दोछन कहार ग्रेविटेशनल पुल सन और अर्थ रो हैला तो सेठी हम किसी स्पेसक्राफ्ट जदी हम रखिबे हमको बहुत मिनिमम फ्यूल यूज करबा तो एते सारा L1 L2 L3 L4 पॉइंट होते पॉइंट गुडा लोकेशन कोठी एठो हम डायग्राम में तुम बुझे दोची धरो एटा होची सन एटा होची अर्थ L1 पॉइंट टा कोठ रहबो आदित्य L1 में होचे L1 पॉइंट मु जेठी मार्क करली L1 पॉइंट टा सेट रहबो हला एठी होचे L1 L2 रहबो एठी L1 ने हमर कोन अछि L1 ने कोन अछि 3 C यस करेक्ट 3 C L1 ने हमर कोन अछि एबे बहुत सारा पढ़ लेनी हमें बहुत थरा L1 ने हमर आदित्य L1 मिशन ता लॉन्च कर त ना रे अछि आदित्य L1 सन को एटा कोन हला हमर अर्थ हला
L1 पॉइंट होची एटा एटी कोन अछि आदित्य L1 एटी लोकेशन रे एमिति रखा हिची ए लोकेशन ताकि सन को से भल से ऑब्जर्व करि परिबो हैला L2 पॉइंट एटा अर्थ रे पड़ साइड रे एटी कोन अछि हमर गोटे रिसेंट में लॉन्च करछे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टा L2 रे अछि L3 टा सन रो पछ पटे अछि हैला L3 लोकेशन टा आउ L4 टा ऊपर अछि L5 टा एठी अछि हैला जानि था लोकेशन गुडा एटा होची हमर सन एटा होची हमर अर्थ L1 पॉइंट एठी अछि L1 पॉइंट एठी अछि L2 पॉइंट अर्थ रे पड़ साइड रे अछि जोटी हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अछि L3 टा सन रो पछ पटे अछि आउ L5 टा तळे अछि L4 टा ऊपर अछि बुझि परलो लोकेशन गुडा बुझा पड़ला तो क्वेश्चन आंसर पर जेम्स वेब टेलीस्कोप टा कोठी अछि L2 पॉइंट रे अछि हैला लैंग्वेज पॉइंट 2 ठीक अछि फर्दर मूव करिया एति की बेसिक फैक्ट मते कहयार थिला काने एते थरा एटा न्यूज रे असलानी consider the following statement superbugs are bacteria that are resistant to several types of antibiotics antibiotics are medications that destroy or slow down the growth of bacteria and viruses third statement Alexander Fleming discovered penicillin first natural antibiotic in 1928 how many of the above statement given above are correct correct statement पचारची superbug विषय देइची से फोर को आस 4 को 3 आंसर सरलानी 4 आंसर कोन 4 आंसर होची बी हैला ओनली 2 बट ओनली 2 जे इथर को स्टेटमेंट सुपर बग्स ता ना रु ही जणा पडुची सुपर बग्स माने कोन नॉर्मल बग्स सुपर बग्स माने से माने को एंटीबायोटिक देकी किल करबा दे आर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट से माने एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हे सरलेनी तो से माने को किल करबा इज वेरी डिफिकल्ट टास्क नॉर्मल एंटीबायोटिक्स रे से पे तांको तांगा ना दियाची सुपर बग्स बैक्टीरिया दैट रेजिस्टेंट टू सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स तो एठी हमको तांको भीतर कोन देखा जाय एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तापरे antibiotics and medication that destroy slow down the growth of bacteria and virus नु virus में तो antiviral अछि हला antibiotic नु antiviral तो बैक्टीरिया को किल करिया हेले हमको कोन दिया हबो antibiotics दिया हबो वायरल को वायरस को इंपैक्ट करिया हेले antiviral दिया होछि हला थर्ड स्टेटमेंट ठीक त सेकंड स्टेटमेंट भूल थर्ड स्टेटमेंट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर करथिले पेनिसिलिन हला बेसिक फैक्ट्स एएमआर कोन हेडा जानथो 4 बी करेक्ट वेरी गुड 4 बी कु दीटा स्टेटमेंट ठीक और कुटा भूल सेटा खाली जानिबार अछि with reference to asteroids which of the following statement is or are correct they are remnants of solar systems formations composed primarily of rock and metal the majority of asteroids are found between orbits of Mars and Jupiter select the correct answer using the code given below आंसर ऑप्शन होची 1 ओनली 2 ओनली बोथ 1 एंड 2 नाइदर 1 नॉर 2 तो एस्ट्रॉइड विषय से पचारछि पढ़दियो क्वेश्चन टा एटा इजी क्वेश्चन टा यार आंसर करिया को ट्राई करो तापरे मु किछि फैक्ट्स कहि देबी 5 रा आंसर ठीक अछि 5 रा आंसर कोन सी हला
बोथ 1 and 2 एथरे फैक्ट जानवर कौन से तो एस्ट्रॉइड विषय रे पचार देला ए दुटा फैक्ट देछि ए दुटा फैक्ट ठीक तो जानि देला एस्ट्रॉइड विषय रे ए दुटा फैक्ट मार्स और जुपिटर मार्स और जुपिटर मझिरे अछि तो एबे मोर क्वेश्चन रहला एस्ट्रॉइड और कॉमेट रो डिफरेंस कोन एटा भी गोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एटा भी गोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बट डिफरेंस कोन एस्ट्रॉइड और कॉमेट भीतर कहि परियो कि बुझे दूची मु एस्ट्रॉइड कोन दे आर रॉकी पार्टिकल्स हैला तार लोकेशन होची मार्स और जुपिटर मझिरे कॉमेट्स कोन से माने वुड क्लाउड कि आउटर जो सोलर सिस्टम बाहर जो वुड क्लाउड से माने सेठु आसंदी से माने को पाखरे रॉकी पार्टिकल्स थाए आइस थाए हैला गैसियस सब्सटेंस भी थाए कॉमेट रे हैला तो एवडा मोस्टली रॉकी पार्टिकल्स थाती कॉमेट्स दे प्रेजेंट ए माने प्रेजेंट का मझिरे मझिरे थांदी मार्स और जुपिटर मझिरे एमजे मझिरे मार्स और जुपिटर मझिरे बट कॉमेट्स दे आर प्रेजेंट इन वुड क्लाउड सोलर सिस्टम बाहर गोटे वुड क्लाउड टाइप रो अछि तो सेठी कॉमेट्स माने थांती और से माने कंपोजिशन कोन करते रॉक पार्टिकल्स थांती डस्ट थाए ताबरे कोन आइस पार्टिकल्स थाए गैस थाए हैला गैसियस सब्सटेंस थाए और जेतेबेले से माने सन सामने रे मूव करंती से माने गोटे टेल प्रोड्यूस करंती हैला तो कॉमेट जेतेबेले गोटे सन सामने रे मूव करी हम गोटे टेल देखा जिवो तार हैला तो सेगुडा होची कॉमेट तो बेसिक जानि तो डिफरेंस एस्ट्रॉइड और कॉमेट भितरे डिफरेंस कोन Next, 6 number question. With reference to ultrasound, which of the following statement is or are correct? Ultrasound operates at a frequency above 20,000 Hz, 20 kHz, which are inaudible to humans. Doppler's ultrasound measures blood flow through blood vessels. Select the correct answer using the code given below. Ultrasound विषय में कही थी Infrasound, ultrasound 20 Hz तौल को Infrasound 20 kHz मतलब 20,000 Hz ऊपर तक कौन कह जाउछ अल्ट्रासाउंड तो सीधा सेतला इंफ्रासाउंड विषय पचार देला एबे अल्ट्रासाउंड विषय यार आंसर 5 सी हां 5 सी वेरी गुड नाइस 6 रा आंसर कोन अल्ट्रासाउंड विषय पचार छी एक्सक्यूज मी इजी क्वेश्चन एटा 6 रा आंसर सी बोथ 1 एंड सी काइना सेतल तो मु कहि दिली 20,000 हर्ट्ज ऊपर होछ अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड यूज करा जाय वेरियस मेडिकल इमेजिंग रे अल्ट्रासाउंड जोटा नॉर्मल डायग्नोस्टिक टेस्ट सेटा एटा यूज करके अल्ट्रासाउंड करके करा जाय और एटा ब्लड वेसल्स रे जो ब्लड फ्लो करछि ताकू भी एसेस करिया को हेल्प करे हमर डॉपलर अल्ट्रासाउंड हैला एटा गोटे डायग्नोस्टिक टेस्ट ता डॉपलर अल्ट्रासाउंड जितरे अल्ट्रासाउंड यूज हुए ओके नेक्स्ट consider the following statement with reference to measure atmospheric Chernikov experiment observatory गोटे टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी बना है ता ना होची मेजर एटमॉस्फेरिक चेर्नोकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी ऑप्शन कौन देछि या विषय मेस विषय माने कैरेक्टरिस्टिक्स कौन देछि इट इज एन इंडिजिनियस प्रोजेक्ट बिल्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क इंडिजिनियसली बनै छै एटा गोटे स्टेटमेंट It is Asia's largest imaging Chernikov telescope which was inaugurated in Ladakh. Hala. It is highest Chernikov telescope in the world situated at an altitude of 4,300 meter. Two statement correct se pachach. Above statements are correct. Only one, only two, all three, none. Your answer kona? Seven answer. आंसर होची सी हैला एमती क्वेश्चन को ट्राई करिवो मन रखि दबा को काना एटी तीनटा जगह स्टेटमेंट ठीक हैला त हमको बहुत सारा फैक्ट्स भी मिल गला एथरे मेस के बनै छै बार्क इनॉग्रेटेड एशिया's लार्जेस्ट एटा गोटे फैक्ट तापर आ गोटे कोन टेलीस्कोप हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रे बनाई छै वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड केते 4300 मीटर रे कोठी बनाई छै लद्दाख रे हैला लद्दाख रे आ गोटे कोन अछि हानले हानले हमर गोटे ऑब्जर्वेटरी अछि सेठी आउ डार्क स्काई रिजर्व भी
आमर लद्दाख को डिक्लेयर कराई है इंडिया डार्क स्काई रिजर्व होची लद्दाख सेठी डिक्लेयर कराई बिकॉज डार्क स्काई रिजर्व कौन पे ना सेठी स्काईटा बहुत क्लीयर था तो हमको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करिया को बहुत इजी हुए से जगह और सेठी लाइट रो इंटरफेरेंस भी बेसी नता है जेहेतु बहुत हाई ऑल्टीट्यूड सेठी पॉपुलेशन भी बहुत स्कार्स तो सेठी लाइट रो इंटरफेरेंस बेसी नहीं स्काईटा भी क्लीयर था तो हमको ऑब्जर्वेशन करिया को इजी हुए हैला तो सेहित में डार्क स्काई रिजर्व बनाई छी लद्दाख रे इंडिया रो एटा भी गोटे फैक्ट जानि था तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रैकोमा ट्रैकोमा गोटे डिजीज हैला it is caused by bacterium Chlamydia trachomatis it is contagious disease and if left untreated causes irreversible blindness c hochi WHO has termed trachoma as a neglected tropical disease d hochi India has eliminated trachoma as the public health problem becoming the first country in Southeast Asia region to achieve this milestone तो not correct पचारची माने चारटा स्टेटमेंट रु भूल स्टेटमेंट हमको काढियार अछि 8 नंबर आंसर भूल स्टेटमेंट एथरो कोडा एटा होची डी हैला भूल स्टेटमेंट होची डी तो ट्रैकोमा कोन इट इज कॉज्ड बाय क्लैमाइडिया ट्रैकोमाटिस एटा गोटे बैक्टीरियल डिजीज हैला एति जानि था फैक्ट बैक्टीरियल डिजीज एटा गोटे और स्प्रेड केमती हुए कांटेक्ट हुए आई कांटेक्ट इन्फेक्शियस जो फ्लूइड अछि हैला सही कांटेक्ट जदी आसला तो सेटा अफेक्ट करबा मोस्ट आई रे देखा जाए आउ इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है वर्ल्ड ओवर रे लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होचे एटा और WHO डिक्लेयर करची और WHO या भी डिक्लेयर करची कि इंडिया हैज अबोलिश और एलिमिनेटेड अबोलिश तो कहबानी एलिमिनेटेड ट्रैकोमा हैला बट इट इज नॉट द फर्स्ट कंट्री नेक्स्ट with reference to silicosis consider the following statement silicosis एटा गोटा होची कोन ऑक्युपेशनल हैजर्ड कि ऑक्युपेशनल डिजीज माने को जगह रे कि गोटे काम करूची माने गोटे माइनर की छोटे जोटी सिलिका प्रोडक्शन होची सिलिका प्लांट रे गोटे वर्कर जदी काम करूची ताकू हबार चांस अधिका तो एटा ऑक्युपेशनल डिजीज और ऑक्युपेशनल हैजर्ड सिलिकोसिस इट इज अ लंग डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलिंग फाइन सिलिका डस्ट often found in industries such as mining, construction and stone cutting. It can be cured by medical therapy. यार आंसर कौन सिलिकोसिस डिजीज विषय पचार सिंपल एटा एनसीईआरटी रे भी अछि सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस ए सब जिंस एनसीईआरटी रे अछि सिलिकोसिस हाँ ठीक अछि यार आंसर कौन यार आंसर होची ए हैला क्योर्ड बाय मेडिकल ऑलरेडी लंग्स टा अफेक्ट हे जाई छी सिलिका इनटेक करी फाइब्रोसिस हे जाई छी लंग रो कैपेसिटी कमी जाई ताकू इरिवर्सिबल करबा इज नॉट पॉसिबल ट्रीटमेंट करके मैनेज करी होबो बट इरिवर्सिबल कर दबा पूरा कंप्लीटली क्योर कर दबा इट इज नॉट पॉसिबल इट कैन बी क्योर्ड बाय मेडिकल थेरेपी लिखाई छी ए स्टेटमेंट होची भूल हैला मैनेज करी होबो बट क्योर करी होबो आ फर्स्ट स्टेटमेंट तो अल्टीमेटली ठीक ही आ तो किछि नाही एतरे नेक्स्ट with reference to proteins consider the following statement they are large complex molecules that play many critical roles in the body they are made up of smaller units called amino acids which are linked together in long chains हैला तो थर्ड होची there are 15 different types of amino acids and the specific sequence in which they are arranged determine the protein structure and function तीनटा स्टेटमेंट देला तो से पचारची हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट तो तीनटा स्टेटमेंट रु आमे देखि देबा कोटा भूल कोटा ठीक सरला आ किछ नै
किए कहि परिबो मु कहि दउ छेटा ए स्टेटमेंट ठीक ए स्टेटमेंट ठीक दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दैट प्ले मेनी क्रिटिकल रोल्स इन द बॉडी प्रोटीन रो फंक्शन तो जानि जो बॉडी रो केते अछि एंजाइम्स अछि हार्मोन्स अछि बहुत फंक्शन दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स टा कोन मोनोमर जोटा की जॉइन हे प्रोटीन फॉर्मेशन हुए ट्रांसलेशन प्रोसेस रे हैला कोन हुए ट्रांसक्रिप्शन तापर ट्रांसलेशन हैला ए सब जिंस amino acid which link together long chains there are 15 ए जिंसटा भूल अछि there are 20 different types of amino acids and the specific sequence in which they are arranged determine the protein structure कहा पर को amino acid आसीबो सेटा डिटरमाइन करे प्रोटीन स्ट्रक्चर but they are not 15 they are 20 हैला 1 and 2 करेक्ट थर्ड नंबर टा भूल next 11 number question consider the following statement with reference to synthetic medical image it is generated by computer algorithms without being captured by traditional imaging devices it allows intra and intermodality translations helping generate missing scans from available data हैला synthetic medical scan एटा गोटे मेडिकल इमेज और स्कैन एटा होची गोटे कोन डायग्नोस्टिक टूल डायग्नोस करिया जेंति अल्ट्रासाउंड करछ एमआरआई करछ सेमिति सिंथेटिक मेडिकल स्कैन और इमेज ए भितर को स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होची कोन बोथ 1 and 2 सिंथेटिक मेडिकल इमेज कोन मु कहि दोची टिके एठी कोन हुए ना एआई यूज करा जाय डायग्नोसिस रे एआई यूज करा जाय इमेज जनरेट करिया को आउ कोरिलेट करिया को किछि जनरेट करिया को किछि ओडे मिसिंग स्कैन अछि दीटा स्कैन मजरे किछि ओडे मिस अछि किछि ओडे जिंसो हमें जानि पारुने सेटा हमें यूज एआई यूज करके जनरेट करि परिबो से स्कैन टाको ताकि हमरो कोन ट्रीटमेंट मोडालिटी टा इंप्रूव करि जिवो हमरो डायग्नोसिस टा आउ एफिशिएंट हे जिवो हैला सेहि पे एता एआई यूज करा जाय हैला next with reference to murine typhus consider the following statement it is an infectious disease caused by flea-borne virus rickettsia typhi it can be prevented through vaccination which of the statement given above is or are correct murine typhus disease विषय कथा होची infectious disease caused by flea-borne virus rickettsia typhi it can be prevented through vaccination ए दीटा भीतर स्टेटमेंट रु कोटा करेक्ट 12 आंसर कहि दोची मेरा आंसर होची 1 only this one is correct but it can be prevented through vaccine currently efficient vaccine या पई नाही हला क्लिनिकल ट्रायल गुडी चली थाई पारे बट currently efficient vaccination या पई नाही तो गोटे स्टेटमेंट करेक्ट आउ हां एटा तो जानलो टाइफी नेक्स्ट which of the following statement best describes orphan drug एटा सिंपल गोटे टर्म नै पळाय छै व्हाट डू मीन बाय orphan drugs supreme court of india also has mentioned about this orphan drugs term हला तो हेत में सेटा important हे जाउची these are no longer manufactured due to lack of commercial profitability these are medications used to treat rare diseases these are used for the treatment of infectious diseases in developing countries these are medications used to treat a variety of common illness orphan drug माने कोन पचरची चारटा देइची ए भितरु आंसर कोडा एटा न्यूज रे अछि currently न्यूज रे अछि जिंसडा सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट हैला दिल्ली हाई कोर्ट ए जिंसडा को मेंशन करछनी ऑर्फन ड्रग विषय रे की आंसर दे परिबो
ट्राए करो आंसर होची बी हैला दीज आर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट रेयर डिजीजेस माने कोन रेयर डिजीजेस माने जहार गोटे पॉपुलेशन हमर एते लार्ज पॉपुलेशन जहार इन्फेक्टिविटी कहे को गले कि नले तार प्रिवेलेंस इन द पॉपुलेशन इज वेरी रेयर माने बहुत लोकन भितरे को गोटे लोक को हबो से डिजीज टा बहुत रेयर से जिंसटा तो सेटा को कहा जाय ऑर्फन ड्रग्स हैला तो यूजुअली ए ड्रग्स ऊपर मोस्टली फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूजुअली रिसर्च करंती नि बेसी बिकॉज़ प्रिवेलेंस बहुत कम जो डिजीज प्रिवेलेंस बहुत अधिक अछि तापर रिसर्च भी बहुत अधिक हुए बट ए सब डिजीज जो रेयर डिजीज तांको ऊपर रिसर्च एते अधिक हेइनी हैला तो सेइते से ड्रग्स गुडा को ऑर्फन ड्रग्स करा जाय बट हमको यांको ऊपर फोकस करिया को पड़िबो बिकॉज़ still they are rare but they are still occurring and causing death among the people. Rest. With reference to auroras, consider the following statement. Auroras occur due to the interaction between solar winds and Earth's magnetic field. Auroras are visible primarily in solar regions due to the concentration of Earth's magnetic field near the poles. Auroras are observed as bright light in atmosphere and are commonly referred to as northern lights in the southern hemisphere. Which of the statement given above is or are correct? एटा तो बहुत मूवी रे भी देखाई अछि ऑरोरास बहुत मूवीज रे भी आछे बहुत लोकंकर विश थाए ए जिंसटा ऑरोरा को देखिबा को बिकॉज़ दे आर वेरी ब्यूटीफुल यार इमेज भी मारी कि तमे देखि परिबो केम देखा जाय तो भितरु को स्टेटमेंट करेक्ट यार आंसर होची 14 नो बी हैला ऑरोरास माने कोन ऑरोरास माने अर्थ रो गोटे मैग्नेटोस्फीयर अछि कि मैग्नेटिक फील्ड गोटे अछि और सन रे सन स्पॉट्स कि सन रे जो बहुत सारा कोरोनल मास इजेक्शन होउची कि बहुत सारा जो रिएक्शन होउची सेटू बहुत मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक पार्टिकल्स भी जनरेट होउची हैला तो सेगुडा जतले सोलर स्टॉर्म जाको कहउची हम सोलर स्टॉर्म रे कोन मैग्नेटिक फील्ड भी थाउची तो से जतले सोलर स्टॉर्म्स आसुची अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करूची जेहेतु पोलर पार्ट रे हमरो कंसंट्रेटेड होची मैग्नेटिक फील्ड ता आउ सोलर स्टॉर्म्स भी आसु जोटी कि मैग्नेटिक फील्ड थाउची तो सन रो और अर्थ रो मैग्नेटिक फील्ड रे इंटरेक्शन होउची तो हमकु इसे इंटरेक्शन पाई वेरियस कलर्स देखा जाए अबव द पोल्स हैला तो ताकू कहा जाए ऑरोरास हैला तो ऑरोरा नॉर्दर्न साइड आउ सदर्न साइड रे देखा जाए एठी कोन कहिची ना दे आर ऑब्जर्व्ड एज ब्राइट कलर्स इन एटमॉस्फेयर एंड कॉमनली रिफर्ड टू एज नॉर्दर्न लाइट्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न लाइट किमि साउदर्न हेमिस्फीयर रे हबो नॉर्दर्न लाइट तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे हबो ना तो सेहि पे इस स्टेटमेंट ता भूल तो दीटा अछि सदर्न हेमिस्फीयर हम तो कहू ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आ ऊपर जो नॉर्दर्न साइड रे जोटा अछि ऑरोरा बोरियालिस हैला नॉर्दर्न साइड रे जोटा देखा होछि ऑरोरा बोरियालिस सदर्न साइड रे जोटा देखा होछि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हैला ए स्टेटमेंट ता भूल 1 and 2 करेक्ट ए जिंस बेसिक फैक्ट्स गुडा जानि थाओ कॉज कोन कोडी देखा जाए ना कोन ए सब जिंस डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आसो आंसर जे जानथिबो करबो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा's यूरोपा क्लिपर मिशन इज यूरोपा क्लिपर मिशन to search for extraterrestrial life on Jupiter's moon Europa हैला to study geology of Europa's icy surface to determine whether Europa has conditions that support life to explore the possibility of human colonization on Europa ए भीतर यूरोपा रो फंक्शन कोन यूरोपा क्लिपर गोटे मिशन जो लॉन्च कराई छि नासा रो तार फंक्शन ए भीतर कोन 15 आंसर फिफ्टीन आंसर हो सी डायरेक्ट क्वेश्चन यूरोपा क्लिपर यूरोपा हूँ कहार मून जुपिटर गोटे मून तो तार सेठी वेदर कंडीशंस सपोर्ट लाइफ करिया को अच्छी ना नहीं सेटा एनालिसिस करिया को यूरोपा क्लिपर लॉन्च कराई छि बाय नासा नेक्स्ट एटा एनसीईआरटी क्वेश्चन
The Haber-Bosch process is used for which among the following? Direct question. आइथरे किछि भाबियार नै, आइथरे टाइम भी हमें वेस्ट करिवानी हला. आंसर होची ए, synthesis of ammonia. Ammonia synthesis process is known as Haber-Bosch process. Next, 17. With reference to diphtheria, consider the following statement. It is an infectious disease caused by bacterium Corynebacterium diphtheria. It makes toxins that kill healthy tissues in nervous system. There is no vaccination available for it. No vaccination available for it. Which of the statement given above are not correct? माने भूल स्टेटमेंट हमको खोजिबार अछि. Not correct माने भूल स्टेटमेंट खोजिबार अछि. 17 रा आंसर कोन? कहि दउछि म एटा 17 आंसर होछि 2 and 3 only. तो भूल कोटा हैला 2 and 3 भूल हैला. तो फर्स्ट नंबर टा करेक्ट. Obviously Corynebacterium diphtheria cause करे make toxins that kill healthy tissues in the nervous system. Nervous system नुहे respiratory system हैला. Next, there is no vaccine. Vaccine अछि ता पई DPT अछि. एटा बहुत जण सुनिथिबो DPT vaccine. DPT रो कोन? डिप्थेरिया गला. एटा डिप्थेरिया. एटा होछि पर्टुसिस. पर्टुसिस को कोन कहै छै? वुपिंग कफ. पर्टुसिस हैला. आ एटा होछि टिटानस हैला. पर्टुसिस टिटानस. डिप्थेरिया तो ऑलरेडी गला. DPT तो वैक्सीन अछि ता पे. नेक्स्ट, आउट इज यूरोपा क्लिपर ऊपर ये क्वेश्चन. What is the primary objective of NASA's Europa Clipper mission recently seen in the news? To study the surface of Mars. Europa Clipper हम तो देखी देले. Jupiter. To explore the rings of Saturn. To investigate the habitability of Jupiter's moon. To study the atmosphere of Venus. यार आंसर कौन? ऑलरेडी देखी सारे एथरे कहीं टाइम वेस्ट करबा. सी, टू इन्वेस्टिगेट द हैबिटेबिलिटी ऑफ जुपिटर्स मून. जुपिटर्स मून कौन? ता ना होची यूरोपा हैला. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू Kala-azar डिजीज गोटे दे देछि. Kala-azar, consider the following statement. It is caused by a virus which is transmitted by infected mosquito. It is characterized by hypopigmented flat skin rash. It is endemic to Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal. The WHO now aims for its elimination by 2030. Correct statement पचारछि Kala-azar देछि. तीनटा स्टेटमेंट ए भितरु करेक्ट कोटा? आंसर दे दउछि मैं आंसर. यार आंसर हो जी बी. तो 2 3 4 एटो में फैक्ट उठे दबा. बिहार एंडेमिक, उत्तर प्रदेश एंडेमिक, वेस्ट बंगाल एंडेमिक. एम्स टू एलिमिनेट बाय 2030. WHO रो टारगेट है 2030 थोड़ा एन करिया को. तो भूल को स्टेटमेंट हैला इट इज कॉज्ड बाय वायरस. एटा ही भूल हैला. वायरस नुहे, इट इज अ प्रोटोजोआन डिजीज हैला. प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ ना कोन? लेशमेनिया डोनोवानी हैला. एते खाली नाडा मन रखता. लेशमेनिया डोनोवानी. जदी सेंटेंस रे कुटी पाइलो देन सेटू आंसर काढा को ट्राई करिवो. तो एटा गोटे वायरल डिजीज नुहे, प्रोटोजोआन डिजीज हैला. तो Kala-azar कोन पई ना स्किन डिस्कलरेशन हुए एथरे. तो सेट में ताको Kala-azar को जाय. काला कलर हैला. कलर डिस्कलरेशन हुए. नेक्स्ट, consider the following statement. Galaxy consists of stars, planets and vast clouds of gas and dust, all bound together by gravity. Galaxies come in a variety of shapes, mostly spiral and ellipticals, as well as those with less orderly appearance, usually
dubbed irregular. The Milky Way galaxy is an elliptical galaxy. Which of the statement given above are correct? Statement गुड़ा पढ़ी दियो तुमको लागु ची कोडा आंसर करेक्ट कोडा एथुर बेसिक क्वेश्चन एटा करेक्ट स्टेटमेंट कोन आंसर होची यार ए हैला 1 and 2 ओनली तो भूल कोटा हैला थर्ड स्टेटमेंट ए एलिप्टिकल नु एटा मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी और एटा एलिप्टिकल नु एटा होची स्पाइरल हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 21 Nemaline myopathy is a rare genetic disorder primarily affecting which system of the human हैला गोटे जेनेटिक डिसऑर्डर जो को सिस्टम को बॉडी रो अफेक्ट करछि रेस्पिरेटरी सिस्टम मस्कुलर सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम ए भीतर आंसर कोटा 21 रो नारू ही जना पड़ जीवो टर्मिनोलॉजी ब्रेक करियो मायोपैथी माने मोस्टली रिलेटेड टू मसल एमती ही एग्जाम रे सॉल्व करियो ट्राई करियो टर्मिनोलॉजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी थाए ताको ब्रेक करियो ट्राई करियो मायोपैथी मायो माने मसल तो इट इज द आंसर इज मस्कुलर सिस्टम एथरे धीरे धीरे मसल्स गुडा डिजेनरेट हे जाय बॉडीज रो हैला रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होबो बॉडी रे नॉर्मल मूवमेंट करियर प्रॉब्लम हो जेहेतु मसल वीक हे चलिबो तो मस्कुलर इश्यूज देखा जीवो तो मस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करे हैला निमेलाइन मायोपैथी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मलेरिया रो आगुरु बहुत पढ़ी छ मलेरिया विषय मलेरिया इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट इट इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल रीजन्स currently there is no vaccine available to prevent malaria its symptoms include fever headache and dark or bloody urine तो तम पचरची नॉट करेक्ट माने फॉल्स स्टेटमेंट हमु काढियार अछि आंसर कोन 22 रो एटा काली भी देखिछे कहि दोची मु आंसर होची सी एटा होची भूल स्टेटमेंट तो ठीक कोन प्लाज्मोडियम पैरासाइट बहुत सारा प्लाज्मोडियम अछन जोटा कि मलेरिया कोज मोस्टली यूजुअली देखा जाय फाल्सिपेरम हैला प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम आउटा होची वाइवैक्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हैला आ गोटे जिंस एबे करेंटली देयर इज नो वैक्सीन इन छोटा भूल बिकॉज़ WHO हैज अप्रूव्ड अ वैक्सीन फॉर मलेरिया ता ना होची कोन R21 मैट्रिक्स नाटा जानी थाओ R21 मैट्रिक्स तो WHO अप्रूव रिसेंटली एबे हेची अप्रूव करा हेची WHO द्वारा से वैक्सीन ना होची R21 मैट्रिक्स तापर नेक्स्ट द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA recently approved Cobenfy also known as Carext for the treatment of which of the following conditions हैला ए ड्रग ता गोटे रिसेंटली अप्रूव्ड बाय FDA को ट्रीटमेंट कहा पे ट्रीटमेंट करिया को एटा अप्रूव करा हेची यार आंसर कोन डायरेक्ट क्वेश्चन एटा आइदर जानिछन ऑल नाही मु कहि दोचे फैक्ट बेस सिजोफ्रेनिया कोन एटा गोटे साइकियाट्रिक इलनेस हैला जोथरे की पर्सन रो मूड स्विंग्स बहुत रैपिड रेट रे हुए माने एबे खुशी थिबो जस्ट 1 सेकंड पर पुनी एंगर हे जिवो आ एई पेशेंट मान को भितरे
सुइसाइड टेंडेंसी बहुत अधिक थाए है तो सिजोफ्रेनिया केबे ट्राई करियो ए विषय पढ़िया को बहुत सारा मूवी भी बना है ए डिजीज ऊपर हॉलीवुड रे बहुत सारा मूवी अच्छी सिजोफ्रेनिया को लेके which of the following is not correct regarding poliomyelitis or polio? It is highly infectious disease caused by a virus. Not correct खोजित माने भूल स्टेटमेंट हम खोजियार अछि. The disease does not spread from person to person. It invades the nervous system and can cause total paralysis. Anyone of any age who is unvaccinated can contract the disease. तो यार आंसर कौन 24 रो रॉन्ग स्टेटमेंट हमको काढियार अछि हैला यार आंसर होची हां यार आंसर होची बी द डिजीज डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो ठीक कोन हैला एटा जदी भूल हे गला स्टेटमेंट जदी भूल हैला देन ठीक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस जानि छ हमें वायरस वायरल डिजीज टा पोलियो हैला it invades the nervous system nervous affects the nervous system and causes paralysis or deformities हैला and can cause paralysis or deformity anyone of any age who is unvaccinated usually below 5 years of age affect करे but जदि गोटे पर्सन वैक्सीनेट है ना देन से को एज रे भी अफेक्ट हे पारे बाय पोलियो हैला अनवैक्सीनेटेड एंड कैन कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज हैला इंडिया पोलियो फ्री डिक्लेयर हेतला केबे 2014 बाय डब्ल्यूएचओ नेक्स्ट consider the following statement mixing chemicals such as benzene pyridine gasoline etc in ethanol by the process of denaturation produces industrial alcohol industrial alcohol can also be used for safe human consumption ए भीतर तुम स्टेटमेंट धीरे जाओ कॉमन स्टेटमेंट बहुत इजी क्वेश्चन यार आंसर कौन लागुस तुमको 25 रो करेक्ट स्टेटमेंट काढियार अछि 25 इजी यार आंसर होची ए ए सब जिंस जदी इथानॉल रे मिसा होची डिनेचुरेशन प्रोसेस रे ताको इंडस्ट्रियल अल्कोहल कह जाय आ इंडस्ट्रियल अल्कोहल जदी एते जिंस बेंजीन मिसा होची बेंजीन केमिति गोटे मनुष्य कंज्यूम करिवो हैला तो सेहित में बेंजीन मिसाला पैराडिन मिसाल गैसोलीन में मिसाल गैसोलीन तो कंज्यूम करि होबन तो एटा इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेफ ह्यूमन कंजम्पशन हैला ट्रैकोमा ऊपर देखिथिले ट्रैकोमा रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ डिजीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैकोमा कोन देखिथिले ट्रैकोमा फ्री इंडिया डिक्लेयर हेछि affects eye one of the leading cause of blindness trachoma with reference to the flue gas desulfuration consider the following statement fgd हैला it is a set of technologies used to remove sulfur dioxide the technology is used in nuclear power plants which of the statement is given above is or are correct one only two only both one and two neither one nor two हैला तो फ्लू गैस डिसल्फुरेशन विषय पचारछि एटा मु कहि दोछि बेसिक टेक्नोलॉजी ता कोन एटा मोस्टली जो चिमनीज लार्ज हाइट चिमनीज थाए कोल पावर प्लांट रे कि जोटी कोल बर्निंग करा जाय और सल्फर रिलीज हबर इंडिया आ गोटे जिंस जानथाओ इंडिया रे कोल रा सल्फर कंटेंट बहुत हाई थाए हैला तो सल्फर जदी हम कोल को बर्न करिवा कंबशन करिवा देन ऑब्वियसली सल्फर रिलीज हबो तो सल्फर जदी रिलीज होला सेटा कोन सल्फर ता गोटे ग्रीन हाउस गैस आ गोटे हेवी पॉल्यूटेंट भी गोटे माने एटमॉस्फेयर बहुत टाइम बंद रुए पॉल्यूटेंट गोटे तो सेहि पई कोन हबो तो हम एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हबो तो सेहि जिंसडा को हमको एटमॉस्फेयर को रिलीज न करिया को हम कोन करा जाय फ्लू गैस डिसल्फुरेशन हैला तो सल्फर टा को कैप्चर करा जाय हैला एई टेक्निक रे आ एटा यूज कोठी कराबे कोल पावर प्लांट्स रे कि जोटी कोल कंबशन करा जाय आ एटी कोन हैला इट इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट किछ भूल नै but the technology is used in nuclear power plant नुहे because it combustion हमें किछि करूछे कि हमें combustion कोठी करछे nuclear power plant नुहे coal power plant रे तो ए जिंसटा भूल तो एथरा आंसर कोटा करेक्ट स्टेटमेंट वन ओनली ला आउट जिंस जानथाओ फैक्ट इंडिया इज द हाईएस्ट SO2 प्रोड्यूसर सबुठ अधिक SO2 प्रोडक्शन इंडिया रे हुए ठीक अछि नेक्स्ट 28 को जीवा consider
Consider the following statements. The International Space Station is a collaborative venture involving the United States, Canada, USA and Japan. United States, Canada, Russia and Japan. Bharatiya Antariksha Station is expected to take shape from 2025 to 2030. Which of the statement given above is or are correct? 28 answer. Easy. ପଢି ଦେଇଛେ କଣ आंसर होची ए एटा तो हम देखि देचे आउ कोन अलगा कंट्री चाइना भी थिला यूरोप भी थिला हैला बट चाइना तो एबे तार निजर ये करछि तियांगोंग निजर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनेछि आ एटा 2025 नुहे 2028 रु स्टार्ट हबो हैला तो वन ओनली डिस्लेक्सिया डिजीज टा बहुत एबे तो रिसेंटली न्यूज नथला बट एटा तो कॉमन जिंस बहुत शुणी थे बहुत जन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इन रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोटे मूवी भी बनछि एथरे डिस्लेक्सिया कोन एटा लर्निंग डिसेबिलिटी लंग इन्फेक्शन स्लीप डिसऑर्डर मसल डिसऑर्डर मु कहि दउ एयर आंसर एटा होछि लर्निंग डिसेबिलिटी तारे जमीन पर मूवी समस्त देखथिबे डिस्लेक्सिया सेथरे कोन ना लिखिबा पढिबारे इशू हुए सेंटेंस फॉर्मेशन करिबारे डिफिकल्ट हुए वर्ड्स गुडा ठीक से लेटर्स गुडा ठीक से रिकॉग्नाइज करियारे कष्ट हुए सेटा को डिस्लेक्सिया कहै छै हैला तारे जमीन पर ठीक अछि तो एने सरला ए पार्ट सरला एने पार्ट 6 को मूव करबा हमें हैला टाइम केतरा हला टाइम हला 114 हला धरो 115 हला हमें 120 रे रिटर्न करबा 5 मिनिट्स ब्रेक जहाँ कुछ फ्रेश होबार अछि किछि रिफ्रेशमेंट करियार अछि हे जाओ 120 रे हमें रिटर्न करबा हैला एबे 115 हला 120 120 पीएम नेक्स्ट स्टार्ट करिया हमें ट्राई करिया मैक्सिमम कवर कर दाबू कने करंट अफेयर कवर हेले एग्जाम पे भी सुविधा एटी बेसिक किछि जिंस कांसेप्ट भी रिवीजन हो जाउची ट्राई करो भलसे एटा जट डाउन कर देबाकू बहुत हेल्पफुल होबो 120
ओके वेलकम एवरीवन स्टार्ट करिया पार्ट 6 को फर्स्ट देची विथ रेफरेंस टू ट्यूबरकुलोसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बहुत पढ़ी सारे हम ट्यूबरकुलोसिस विषय टीबी विषय इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इट ओनली अफेक्ट्स द लंग्स इन द बॉडी इट इज प्रिवेंटेड बट नॉट क्यूरेबल सब जगह मु काली कहिची ए विषय यार आंसर किए दे परियो 1 रो आंसर कोन 1 रो नॉट करेक्ट पजे भूल स्टेटमेंट ट्राई कर आंसर करियो काली सब जगह कहिची मु आज भी आउ रिपीट कर देबी भूल स्टेटमेंट इथरो कोडा 2 and 3 फॉल्स अछि तो काली मु क्लियरली कहितली इट ओनली अफेक्ट्स द लंग्स इन द बॉडी ए स्टेटमेंट ता भूल खाली लंग्स नुए इट आल्सो अफेक्ट्स स्पाइन अफेक्ट करे इंटेस्टाइन अफेक्ट करे हला तो खाली लंग्स में बॉडी रो अलग पार्ट्स को भी अफेक्ट करे नेक्स्ट इट इज प्रिवेंटेबल बट नॉट क्यूरेबल प्रिवेंटेबल हां माने से ड्रॉपलेट्स तो हमें दूर रही परिया ठीक अछि बट नॉट क्यूरेबल काहे यार क्यूर तो अछि काली हमें पढ़िथिले गोटे नुआ रेजिम बाहरची बी पाम रेजिम लिनेजोलिड मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ए सब ड्रग्स यूज करा होचे रिफाम्पिसिन पूर्व यूज करा होतला जतले रेजिस्टेंट होची सेत पई ए बी पाम रेजिम यूज करा जाउची यार इफेक्टिवनेस कोन ना ट्रेडिशनल ये रे कोन 16 मंथ्स 18 मंथ्स 20 मंथ्स एमती लागुतला ट्रीटमेंट पई बट एटा 6 मंथ्स रो ट्रीटमेंट 6 मंथ्स रे इंप्रूवमेंट देखा जाए आउ क्योर भी हे जाए सेत पई एटा भी रिसेंटली ये करा होची रेजिस्टेंट टीबी पई हला नेक्स्ट LiDAR technology recently seen in news is primarily used for LiDAR technology विषय पचारची एटा emerging technology गोटे examining the surface of the earth monitoring air quality in urban areas analyzing ocean currents and wave patterns forecasting weather patterns ए भितरु LiDAR कु जगह रे यूज करा होची यार आंसर 2 रो कहि दोछु मु जल्दी जल्दी हमको मूव करे अछि टूर आंसर होछि एग्जामिनिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ हैला लाइडर टेक्नोलॉजी टा कोन ना लाइजर टेक्नोलॉजी होछि सेतरे लाइट यूज करा जाए लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पल्सेटिंग लेजर हैला यूज करा जाए गोटे डिस्टेंस मेजर करिया को लाइडर टेक्नोलॉजी ऑटोनोमस व्हीकल रे भी यूज करा होछि ऑटोनोमस व्हीकल माने जो माने सेल्फ ड्राइविंग कार्स जोडा को चाहे सेते लाइडर टेक्नोलॉजी यूज करा होछि बिकॉज़ से लाइडर टेक्नोलॉजी यूज करिकी लेजर यूज करिकी डिस्टेंस टा को मेजर कर दोछनी दीटा कार भीतर केते डिस्टेंस तो सेही अनुसार से माने निजर स्पीड को रेगुलेट करछनी तो सेही यूज करा होछि आ को जगह रे यूज करा होछि ना सरफेस ऑफ द एग्जामिनिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ माने गोटे लाइडर गोटे सोर्स अछि गोटे सेंसर अछि आ गोटे ट्रांसमीटर अछि तो से माने कोन करछनी से लाइडर टेक्नोलॉजी यूज करछन लेजर टा यूज करछन गोटे जगार डिस्टेंस केते अछि कुटी जदी हाइट अधिका अछि कम अछि तो से अनुसार लेजर बेसिस रे से माने एनालाइज करछनी सरफेस ऑफ द अर्थ केमिति अछि कु जगह रे केते हाइट अछि कु जगह रे कम हाइट अछि ए सब जिंस करि परछन लाइडर टेक्नोलॉजी तो एटा लेजर यूज करछन एठी हला लाइट टा पल्सेटिंग फॉर्म रे इन द फॉर्म ऑफ लेजर यूज करछन ए टेक्नोलॉजी आ को जगह रे एटा यूज होछि ना ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल्स लाइडर सेंसर थाउची नेक्स्ट आ गोटे भी जगह अच्छी स्मार्टफोन्स रे भी बहुत जगह बहुत टाइम रे देखा गले लाइडर सेंसर्स रोची स्मार्टफोन रे भी देखा होची जेतेबेले हमें फोटो किछि उठाउछे तो से माने डिस्टेंस मेजर करि परछन मोर एक्यूरेट मोर क्लैरिटी पिक्चर दे परछन स्मार्टफोन ने भी आसलाने एबे लाइडर हला तो सेत पे न्यूज़ रे अछि जानिया भी कथा द स्पुटनिक 2 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ वाज एम्ड टू study the effects of space travel on living organisms track methane emissions at global scale, study the flow of particles and ionized gas, study the moon surface materials. यार आंसर कौन है स्पुटनिक रो स्पुटनिक 2 किए कहि परिबो
ठीक अच्छे आगू मूव करवा यार आंसर होची स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो यार बेसिक फैक्ट्स मु कहि दउची स्पुतनिक विषय रे स्पुतनिक 2 मिशन एटा 67 इयर्स अगो ये करा हेतला ऑलमोस्ट 67 इयर्स अगो हला तो 67 68 इयर्स अगो हेतला सोवियत यूनियन एटा ये करथला सोवियत आउ एथरे कोन हेतला ना गोटे डॉग को स्पेस को पठाइतला डॉग रो नेम होची लाइका हला a dog named Laika was sent to space because directly human beings को पठेवा was a difficult task and a risky task. So a dog was sent to space whose name was Laika to assess the impact of space or the exosphere or the atmosphere means the space environment on the living organisms. Tapare after few years Yuri Gagarin was sent. He was the person who was sent to space. फर्स्ट यांको पठाइतला कुकुर को गोटे पठाइतला लाइका इंपैक्ट देखाइतला देन ह्यूमन बीइंग को पठाइतला द ह्यूमन बीइंग वाज यूरी गैगरिन हैला ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑर्बिट द अर्थ ठीक अछि बुझियो छी ओके फर्दर मूव करिया आदित्य L1 will be positioned at L1 Lagrange point which of the following statement best describes this point Lagrange point विषय पचारछि आदित्य L1 we have studied it Sabu jaka we have also studied all the Lagrange points, why it is important, where is Aditya L1 present, where is James Webb telescope present. We have all studied it. Okay, these points are present between with two celestial bodies. For example, it is present between Sun and Earth. Hala. Se kon pacharchi Aditya L1 will be positioned at L1 Lagrange point. Which of the following statement best describes this point? Sabu jaka karche. A location in space where the gravitational pull of Earth and the Moon is balanced. A point between the Earth and Sun where gravitational forces balance. A point between the Earth and Mars for constant communication with Mars missions. A location beyond Pluto where spacecraft experience minimal gravitational interference. The correct answer यार कौन 4 easy question एटी टाइम वेस्ट करिबानी हमें already discuss होइछि B a point between earth and sun where gravitational forces balance सरला consider the following statement regarding gravitational energy storage एटा भी या कांसेप्ट हमें काली डिस्कस करछे जो दुटा रिजर्वोयर कहितली मु गोटे रिजर्वोयर गोटे अधिक हाइट रे थिबो गोटे रिजर्वोयर कम हाइट रे थिबो तो पोटेंशियल एनर्जी वाटर सेटी जो हाई अल्टीट्यूड के हाई हाइट रे सेव करा हिची रखा हिची तो तार पोटेंशियल एनर्जी अधिक थिबो जते बेले लोअर रिजर्वोयर को हमें ताको आनिबा देन से पोटेंशियल एनर्जी टा काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट होबो यदि रास्ता रे हमें गोटे टरबाइन लगे दबा देन ऑब्वियसली सेटू कोन होबो एनर्जी जनरेशन होबो से जिंस एटी ग्रेविटी रो प्रिंसिपल यूज करा होची हैला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोरेज GES stores energy by converting electrical energy into gravitational potential energy through lifting heavy masses. GES is primarily suitable for short-term energy storage rather than grid stabilization. Concrete blocks, water, and compressed earth blocks are commonly used as weights in GES systems. हमें कल या भितर डिस्कस करते हैं, है ना? Which of the following statement given above are correct? 5 number answer. कहि दोछि मु एना आंसर होछि बी टू स्टेटमेंट टा भूल बिकॉज़ GES is primarily suitable for short term energy storage rather than grid stabilization. Grid stabilization माने कोन गोटे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे हमर जो ग्रिड अछि ग्रिड को बहुत जगह रो एनर्जी आसे बहुत जगह रो एनर्जी इन द सेंस करंट आसे बहुत सारे प्लांट रो आसे जोटी प्रोडक्शन होछि न्यूक्लियर पावर प्लांट रो आसे हाइड्रोलॉजिकल सोर्सेस रो आसे तापर जो कोल पावर प्लांट अछि सेटू आसे थर्मल पावर प्लांट सेटू आछि तो सब जगह आसी कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड रे इंटीग्रेट हुए देन ग्रिड रे इंटीग्रेट हैला परे दे आर फर्दर ट्रांसमिटेड टू आवर हाउसेस तो जिंस कोन हुए ना ग्रिड स्टेबलाइजेशन बहुत टाइम रे कोन हुए को टाइम रे अधिका इलेक्ट्रिसिटी पळाय से को टाइम रे कम इलेक्ट्रिसिटी पळाय से अधिका आसले मैनेज करी हुए जदी कम आसला देन ताको केमदी कोन करबा तो
अलग जगह आमको आउ इलेक्ट्रिसिटी आनिया को पड़िबो ग्रिड स्टेबलाइजेशन करिया को एनर्जी डिमांड को फुलफिल करिया को तो एथरे से कहि कि जी इज प्राइमरली सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज रादर देन ग्रिड स्टेबलाइजेशन नहीं आमे वाटर को तो बहुत टाइम बंद स्टोर करी रखि पेरे जेतले हमको इशू हबो ग्रिड स्टेबलाइजेशन की इलेक्ट्रिसिटी और अधिक दरकार पड़छ तमे सेटा को वाटर टा को यूज करी कि हाई हाइट रु लो हाइट को ट्रांसफर करके टरबाइन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करि परिबा सेहि पई ए स्टेटमेंट टा भूल इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रिड स्टेबलाइजेशन और एटा शॉर्ट टर्म पे नो लॉन्ग टाइम पे भी यूज कर परिबा हैला नेक्स्ट लिग्नोसैट रिसेंटली सीन इन न्यूज एम्स टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून advance the understanding of earth's ocean and atmospheric interactions test the viability of wood as a sustainable material in space exploration explore the Saturn system including its rings and moons एटा मु कहि दोछि डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लिग्नोसैट यार आंसर होछि टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ वुड एज अ सस्टेनेबल मटेरियल इन स्पेस तो एटा जापान एक्सपेरिमेंट करछि सैटेलाइट वुड रे बनै कि काठ रे बनै कि सैटेलाइट दे आर ट्राइंग टू सेंड इट टू द स्पेस and try to see how sustainable is wood as a satellite material and it can be further used in future space researches or not hala next Sir C.V. Raman was honored with Nobel Prize in Physics and later awarded with Bharat Ratna on his discovery of Raman effect. What does this Raman effect demonstrate? Options guda hochi light changes color when it passes through certain gases. A fraction of light scattered by a liquid has different colors. C hochi light intensity increases when reflected off a solid surface. D hochi light waves bend when passing through magnetic fields. तो यार आंसर कौन होबो के कोइ परिबो 7 आंसर ट्राई करो आंसर करियाको कोइ दोछि बी होबो यार आंसर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय लिक्विड हैज डिफरेंट कलर तो जदि गोटे लिक्विड अछि गोटे फ्रैक्शन ऑफ लाइट आसिला से स्कैटर करिवो तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर स्पेक्ट्रम हमको देखा जिवो तो सही जिनसटा होछि रमन इफेक्ट जुत पाएंगे तांको नोबेल प्राइज और भारत रत्न मिलथिला Which of the following statement is not correct regarding allulose? Allulose गोटे substance तो ता विषय पचारि को जिंस गुडा ता जिंस रे भूल It is naturally found in certain foods like wheat, raisins and figs. It provides around 70% of the sweetness of regular sugar. It has bitter aftertaste similar to aspartame. High production cost limits its use as a commercial sweetener. तो allulose एतिके जानि थाओ बेसिक फैक्ट मु कहि दे गोटे आर्टिफिशियल स्वीटनर आउ एटा माने डायबिटिक पेशेंट माने भी नौछनी बिकॉज यार सुगर स्पाइक बहुत कम थाए माने बहुत कम रेट रे सुगर लेवल टा ब्लड रे इंक्रीज करे ताको कहि दे सुगर स्पाइक हला यार बहुत कम थाए हला एल्यूलोस तै भितरु को स्टेटमेंट ता भूल नॉट करेक्ट भूल स्टेटमेंट ता काढिबार अछि कहि दोछि मु सी It has a bitter aftertaste similar to aspartame. नहीं यार bitter aftertaste नस्ता है sweetness था यार अब बाकी सब स्टेटमेंट ठीक अछि सेट तमे फैक्ट्स पिक कर देबो बाकी सब स्टेटमेंट हैला how does a lightning conductor help protect a structure from damage during lightning strike जो सब घर मान करे थाए अर्थिंग lightning conductor गोटे थाए अर्थिंग थाए तो से विषय क्वेश्चन अछि by deflecting lightning away from the building by storing the electric charge in a capacitor by attracting lightning and safely channeling it to the ground by increasing the electric resistance of the building एथरो आंसर कोनडा जो अर्थिंग सिस्टम हमर अछि तार बेसिक फंक्शन विषय पचार कोइ दोछि मु by attracting lightning and safely channeling in it to the ground बेसिक कोन ना लाइटनिंग को जगह स्ट्राइक कर जोटा कि से एरिया रे गोटे अधिका हाइट रे थिबो आउ गोटे कंडक्टर थिबो हला तो सेठी स्ट्राइक करिवो हला आउ इन्सुलेटर थिले भी स्ट्राइक करे बट कंडक्टर थिले ना कोन सेटा पास कर दबो अर्थ को हला बट हमको जिंस कोन जानिबार अछि ना एमती गोटे थाए
छात उपर लगी थाए बहुत जगह बिल्डिंग मानक तो सेटा टिके हाइट रे रखा जाए ताकि सेटा अट्रैक्ट करिवो लाइटनिंग को से जिंसटा को बाईपास कर दबो अर्थ को से जिंसटा से कहिछि बाय अट्रैक्टिंग लाइटनिंग एंड सेफली चैनलिंग इट टू द ग्राउंड हला नेक्स्ट celiac disease is related to which of the following celiac disease गोटे disease related to which of the following होची high sugar consumption viral infection allergic reaction to gluten आउ nervous system यार आंसर किए कहि परिबो 10th नंबर रो क्वेश्चन रो आंसर एथरे केतरा फैक्ट अछि मु बुझे दोचे एथरे ट्राई करो एरा आंसर होची एलर्जिक रिएक्शन टू ग्लूटेन हला तो एने कोन ग्लूटेन टा होची गोटे प्रोटीन हला एटा कुटी देखा जाय यूजुअली बार्ले हला मेज ए टाइप रो जिंस रे देखा जाय प्रोटीन टा आ एटा मोस्टली बहुत टाइम रे कोन हुए ना हमर गोटे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अछि प्रोटीएज बॉडी रे हला जेतले प्रोटीन आसे सेटा को से डाइजेस्ट करे चेष्टा करे सेटा के डाइजेस्ट करे ना प्रोटीएज तो बहुत टाइम रे कोन हुए ना प्रोटीएज ग्लूटेन को डाइजेस्ट करि पारेनी तो कौन हुए एटा गोटे फॉरेन पार्टिकल फॉरेन प्रोटीन टाइप रो हे जाय तो एंटीबॉडीज आसी कि या पर अटैक करते हम बॉडी रे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुए या पर ग्लूटेन ऊपर अटैक करती तो सेति में कोन कला एलर्जिक रिएक्शन एंटीबॉडी आसुची प्रोटीन ऊपर अटैक करूची देन कोन तको एलर्जिक रिएक्शन को जाय तो सेटा ही जिंसटा ग्लूटेन होची हला आउ ए जिंसटा को कोन कह जाउची सिलिएक डिजीज बॉडी रे जो होची स्मॉल इंटेस्टाइन रे ठीक अछि मूव करिया को नेक्स्ट thrombotic thrombocytopenic purpura TTP is a disorder related to which of the following नारु स्टॉर्म रे ब्रेक करियो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बो कोन मोस्टली किछि रिलेटेड टू ब्लड हेथिबो आ कोइ परथिबो एई टर्म रे एम्ति ब्रेक करिया पड़ियो थ्रोम्बो थ्रोम्बोलिसिस थ्रोम्बो ब्लड रिलेटेड किछि ओडे जिंस हेथिबो तो सेत में आंसर होची ए ब्लड हला एम्ति टर्म जानि भी नथिले एम्ति टर्म को ब्रेक करिया को चेष्टा करियो से किछि डिटेल पचानी ना जस्ट खाली डिजीज देछि रिलेटेड टू व्हाट आउ एथरे आउ किछि बेसी इंटरनल जिंस भी से पचानी हला तो बेसिक मु कहि दोछि एथरे बॉडी रे वेरियस ब्लड वेसल्स वेरियस जगह रे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाय हला तो सेटा बहुत इशू हुए क्लॉट फॉर्मेशन हो जाय हार्ट फेलियर हुए हला बेसिक lead ingested or inhaled in a health hazard after the addition of lead to petrol has been banned what still are the sources of lead poisoning lead aguru petrol बहुत आस्तला बट धीरे धीरे जणा पड़ला कि lead रो साइड इफेक्ट्स बहुत अधिका न्यूरल डिसऑर्डर्स होची रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होची हैला तो सेत में lead एबे पूरा बैन अछि फ्यूल रे lead ऐड करा जाऊ नाही हैला बट देयर आर स्टिल अदर सोर्सेस ऑफ lead से पचाला कोन सोर्सेस smelting units, pens and pencil, pens, hair oils and cosmetics. 1, 2, 3, 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3, 4. यार आंसर कौन 12 नंबर यार आंसर होची बी 1 and 3 हैला smelting units और hair oil and pen और pencil पेन तो नहीं पेंसिल तो जना अछि कोन अछि ग्राफाइट अछि हां कि नै हैला पेन से तो बेंजीन थाए हैला चलो which of the following was the first planet discovered with the aid of telescope यूज करके फर्स्ट प्लैनेट कोटा डिस्कवर करा हितला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कहि दोछि मु आंसर होछि यूरेनस हैला यूरेनस was the first planet which was discovered using telescope कौन पे यूरेनस न्यूज रे आछि गोटे वॉयर 2 मिशन गोटे हैला
এটা ফ্লাই বাই করিছি অ্যাক্রস ୟୁରାନସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁରାନସ୍ ଟାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଛି ୟୁରାନସ୍। ନେକ୍ସଟ, which of the following statement is not correct regarding measles? not correct ପଚାରିଛି, ଭୁଲ statement ପଚାରିଛି ହେଲା, ଭୁଲ statement ଆମକୁ କାଢିବାର ଅଛି measles ବିଷୟରେ। it is highly contagious disease caused by bacteria. it can affect anyone but is most common in children. Its symptoms include a high fever, cough, runny nose and rash all over the body. This disease can be prevented with vaccination. भूल स्टेटमेंट एथरो कोटा आंसर कोई दोची मु यार आंसर भूल स्टेटमेंट होचे एटा ए नंबर एटा बैक्टीरिया नुए वायरस एटा गोटे वायरल डिजीज मम्स मिजल्स मम्स एटा सब वायरल डिजीज आउ गोटे जिनस कौन दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन को वैक्सीन एमएमआर मिजल्स मम्स आउ रुबेला हैला मिजल्स मम्स आउ रुबेला ये तीनटा डिजीज वैक्सीनेशन एकाथरे हुए एमएमआर हैला जानता हो बेसिक फैक्ट विथ रेफरेंस टू सिकल सेल एनीमिया बहुत बड़ी सारे सिकल सेल एनीमिया विषय with reference to sickle cell anemia consider the following statement. It is transmitted by parents carrying defective gamma globin gene. The RBCs become hard and sticky and look like a C-shaped farm tool called sickle. Which of the following given statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. So your answer कौन? कितना नंबर क्वेश्चन है? 15. कोई दूच मेरा आंसर यार आंसर होची 2 ओनली हैला तो एटा गामा ग्लोबिन नुए बीटा ग्लोबिन जीन रे इशू थाए ए गोटे जिंस पे स्टेटमेंट भूले गला सिकल सेल एनीमिया बहुत पड़ी साले आगु कैश गेवी कौन सेटा थिला जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करिया पे अप्रूव्ड बाय सम कंट्रीज रिसेंटली ठीक अछि इज फैक्ट काली भी काली रो वीडियोस तमे देखि परियो रिवाइज करियो काने बहुत जिंस लिंक्ड अछि फर्स्ट वीडियो संगे with reference to GSAT-20 consider the following statement. GSAT-20 is designed to provide internet connectivity to remote areas in India. Okay, it will be launched using India's LVM-3 rocket from Sriharikota. Which of the statement given above is or are correct? यार आंसर के दे परियो वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू केतना नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है आंसर कोई दोच मेरा आंसर यार आंसर होची ए GSAT-20 गोटे सैटेलाइट हैला जोटा कि लॉन्च करा हबो यार मेन पर्पस कहया को गले इंटरनेट कनेक्टिविटी एटा इंडिया ही लॉन्च करी इंडिया रो सैटेलाइट टा बट लॉन्च के करिवो ना स्पेसएक्स GSAT-20 रो फंक्शन कोन ना इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज प्रोवाइड करिया को हैला मैंडेट यार सेहित में लॉन्च करा हो इंटरनेट कनेक्टिविटी हैला आउ नेक्स्ट पॉइंट टा कोन इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग LVM-3 ना एटा भूल नुए एटा LVM-3 रॉकेट नुए इट विल बी लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स रो फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स रो रॉकेट ना होची फाल्कन 9 हैला एटा यूज करी लॉन्च करा हबो ना कि इंडिया रो सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स बेसिक सल्ला with reference to India satellite launch vehicle consider the following statements. India रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विषय स्टेटमेंट थिबो देखिबा कोन कोन अछि First statement होची PSLVs launch the satellite useful for earth resources monitoring whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. Okay. Second statement देखिबा satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the particular location on earth. GSLV Mk3 is a 4-stage launch vehicle
with first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stages using liquid rocket engines. तो एथरे पूरा तमरो PSLV GSLV रिवाइज हो जिवो ए गोटे क्वेश्चन रे पूरा रिवाइज हो जिवो तमरो लॉन्च व्हीकल टा which of the following statement correct statement हम काढियार अछि कोन को स्टेटमेंट देछि तम पाखरे अछि एथरा आंसर मते के कोइ परिबो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर कहला परे हम बेसिक किसी फैक्ट देखि देबा PSLV GSLV विषय रिवाइज भी हे जिवो आंसर कोन यारो यार आंसर होची ए खाली फर्स्ट ही ठीक PSLV launch vehicle launch the satellites useful for earth monitoring whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite तो बेसिक किछि फैक्ट देखि देबा PSLV लेस पावरफुल देन GSLV हैला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ए माने मोस्टली यूज करा जाय हमरो गोटे पर्टिकुलर वेट को लो अर्थ ऑर्बिट को ट्रांसफर करबा को जिंसटा को हैला बट GSLV यूज करा जाय जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट ए सब जिंस को माने टिके अधिका हाइट को अधिका वेट को ट्रांसफर करिया को GSLV मोर पावरफुल एटा मोर पावरफुल स्पेसक्राफ्ट एटा यूज करा जाय हैला जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हैला नेक्स्ट स्टेटमेंट कोन सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंट एटा ऑपोजिट कर देछि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रे जेतला हम जिंस को लॉन्च करूचे हमको देखा जाए कि इट इज तार रोटेशन टा अर्थ संगे समान था तो सेति में हमको पर्टिकुलर जगह रे ही देखा जाए सैटेलाइट टा हैला तो एटा उल्टा कर दे स्टेटमेंट दिस इज नॉट PSLV दिस इज GSLV सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड ना एटा GSLV हे गेला ठीक अछि तापर नेक्स्ट GSLV is a four stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket ए जिंसटा भूल GSLV टा होची 3 स्टेज ठीक अछि 3 स्टेज आउ एथरे ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज करा जाय 3 स्टेज माने कोन ना फर्स्ट स्टेज रे हमें सॉलिड फ्यूल यूज करूचे सेकंड स्टेज रे हमें लॉन्च करू यूज करूचे लिक्विड फ्यूल आउ थर्ड स्टेज जोडा कि सबटु एडवांस स्टेज सेटा को सेठी हमें यूज करूचे क्रायोजेनिक हैला लिक्विड हाइड्रोजन बहुत कोल्ड टेंपरेचर रे जोटा रखा जाय क्रायोजेनिक हैला बट GSLV जो देखले PSLV कोन PSLV टा होची 4 स्टेज कोन ना एथरे क्रायोजेनिक हमरो न थाए फर्स्ट एंड थर्ड गोटे थाए थर्ड सेकंड एंड फोर्थ गोटे थाए हैला एठी खाली लिक्विड आउ सॉलिड थाए हमरो हैला एठी क्रायोजेनिक ये न थाए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज थाए सॉलिड ठीक अछि सेकंड एंड फोर्थ थाए लिक्विड एटी क्रायोजेनिक स्टेज न थाए एती बेसिक फैक्ट पूरा रिवाइज कर देले ठीक अछि बुझा पड़छि ओके जल्दी जल्दी मूव करिया Which of the following statement is not correct regarding chikungunya? Chikungunya विषय पचरछि काली भी आ विषय पढिछे It is a viral disease transmitted by Aedes mosquitoes. Not correct पचरछि तो भूल स्टेटमेंट हम काढियार अछि It is a viral disease transmitted by Aedes mosquito. Chikungunya is found in tropical and subtropical regions. The disease is not transmitted from one person to another. And D होछि none of the above. तो इथरु आंसर कोडा 18th आंसर काले चिकनगुनिया विषय बहुत डिटेल रे पढ दैछे हम चिकनगुनिया डेंगू ए सब जिंस रे पढिछे तो रॉन्ग स्टेटमेंट कोन एथरे सब जगह स्टेटमेंट ठीक अछि नॉन ऑफ द अबव किछि भी स्टेटमेंट एथरो रॉन्ग नै वायरल डिजीज एडिस एडिप्ची मस्किटो द्वारा ट्रांसमिट हुए फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल रीजन्स हां इंडिया रे देखा जाय द डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हैला पर्सन टू पर्सन रे ट्रांसमिशन होनी मस्किटोज बाइट कले ही ट्रांसमिट हुए
वायरल डिजीज टा with reference to thies cardboard virus एटा भी गोटे virus टा consider the following statement. It is highly contagious viral disease that primarily affects Asiatic honeybees. It causes larvae to turn yellow, then black, and develop a sac-like appearance due to incomplete pupation. दीटा जाक स्टेटमेंट भितर करेक्ट कोटा पचारछि आंसर कोन 19 रो बेसिक फैक्ट एथरा डिटेल कोन जानि रहछ एरा आंसर होछि बोथ 1 and 2 तो एटा गोटे थाइस्कार्ब ब्रूड वायरस अफेक्ट्स हनीबी एपिस इंडिका हनीबी हला एशियाटिक हनीबी एपिस इंडिका ताको अफेक्ट करे तो लार्वा स्टेज रे ताको अफेक्ट करे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पोलियोमिलाइटिस पोलियो न्यूज रे एते आसुची काहे कि एटा फर्स्ट तमे जानि थाओ इंडिया रे तो एते पोलियो केसेस नै बट एटा न्यूज रे काहे कि आसुची बिकॉज़ अफगानिस्तान में पोलियो केसेस देखा जाउची हैला पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत केसेस आसुची आउ गाजा स्ट्रिप इजराइल पैलेस्टाइन जो कॉन्फ्लिक्ट अछि सेहिटी भी बहुत पिला एने देखा जाउची ने अफेक्ट होउची पोलियो द्वारा हैला सेहित पे एते न्यूज रे आसुची पोलियोमिलाइटिस हैला इट इज हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज इट प्राइमरली अफेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 it does not spread by respiratory droplets from coughing or sneezing there is no cure for polio it can only be prevented से पचारची not correct माने भूल स्टेटमेंट ता ए भीतर भूल स्टेटमेंट कोटा केतना नंबर क्वेश्चन 20 एटा एठी टिके देखिले मु आ टिके डिटेल आ टिके एत थर जेहेतु आसिले ना आ टिके भीतर को डिटेल दिबा को चेष्टा करिया काना क्वेश्चन आसी पारे कहि होबनी किछि आंसर आंसर होची सी स्टेटमेंट ता होची भूल it does not spread by respiratory droplet it can be spread by respiratory droplets हला आउ टिके जिंस जेहेतु एते न्यूज आसिलानी हमें आउ टिके डिटेल देखि दबा वैक्सीन क्वेश्चन आसी पारे वैक्सीन ऊपर कना मोस्टली पोलियो न्यूज रे आसी वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन ही आसी पारे हला केमती स्प्रेड होची सेमती आसी पारे हम तो देखि चले आ खाली वैक्सीन पार्ट टिके डिटेल देखि दबा दीटा टाइप रो वैक्सीन अछि ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन आउट आईपीवी जोटा कि इंजेक्शन द्वारा दिया जाए हैला तो और ओपीवी कौन थाए ना लाइव एटेन्यूएटेड वायरस लाइव एटेन्यूएटेड यार माने कौन ना वायरस टा लाइव अछि बट ताकू वीकेंड करा हे जाय हैला वीकेंड फॉर्म ऑफ द वायरस इज गिवन आ एटा केमती दिया जाए ओरली दिया जाए ओरल 2 बूंद जिंदगी के ओरल हैला सेटा ओपीवी दिया जाए आउट होची आईपीवी आईपीवी माने इट्स अ किल्ड वायरस यूज करा जाए वायरस टाकू ऑलरेडी किल करा है जाय किल्ड वायरस एथरे वीकेंड वायरस एथरे किल्ड वायरस आ एटा केमती दिया जाए वाया इंजेक्शन एत्ती की जानि था हैला नेक्स्ट 21 को जिबा विथ रेफरेंस टू नाफिथ्रोमाइसिन एटा तो न्यूज रे अछि बहुत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एटा ड्रग ता हैला जोटा कि इंडिया डिस्कवर करछि इंडिया डेवलप करछि एटा इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड antibiotic aimed at combating antimicrobial resistance it is designed to treat community acquired bacterial pneumonia caused by drug resistant bacteria which of the statement given above is or are correct 21 answer कि दे परिबो ओनली वन आंसर होची सी हैला बोथ 1 एंड सी किछटा मु फैक्ट तुमको कहि दोची एटा गोटे एंटीबायोटिक ड्रग टा हैला कोन पे एटा डेवलप कराई बिकॉज एबे बहुत हम हॉस्पिटल रे कि बहुत सारा डिजीजेस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखौछनी माने से माने बैक्टीरिया माने रेजिस्टेंट हो जाइछि ना एंटीबायोटिक माने एंटीबायोटिक हम तांको दउचे तांको ऊपर इफेक्ट होनी तो असुविधा कोन होची ना डिजीज टा क्योर होनी तो बहुत जगह बहुत डिजीजेस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखौछन तो सेइत पे हमको गोटे रिजर्व ड्रग बनैबार थिला जोटा कि हमको रखिया को पड़िबो जेतेबेले अलगा किछि ड्रग काम करिवोनी हमें ताकू दबा तो एटा ही गोटे रिजर्व ड्रग जोटा कि रखा हिची एटा कॉमनली दिया हुएनी इट इज यूज्ड एज अ रिजर्व ड्रग जेतेबेले किछि जिंस काम करिवोनी आ किछि भी एंटीबायोटिक काम करनी देखछु देन नाफिथ्रोमाइसिन इज गिवन हैला एटा डेवलप्ड बाय इंडिया आ तमे भाबो गोटे ड्रग डेवलप करिया को केते टाइम आ केते
इन्वेस्टमेंट लगे मु तार डाटा दउछ तुमको ए ड्रग टा डेवलप करिया को 14 इयर्स लागिला हैला आ इन्वेस्टमेंट केते हिची जानिछो 500 crores माने भाबा गोटे सिंगल ड्रग डेवलप करिया को केते टाइम लागुची आ केते इन्वेस्टमेंट लागुची 500 crores इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ ड्रग आ आमे एंटीबायोटिक टाको मिसयूज करूचे तार प्रॉपर यूज करने सहित में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखा जाउची ओवर द काउंटर जाके डायरेक्ट नहीं पड़े आछे एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स को देखोने तो सहित में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस धीरे धीरे देखा जाउची केते टाइम लागुची गोटे ड्रग डेवलप करिया नेक्स्ट GQRCP GQRCP a new diagnostic technology recently seen in the news एटा डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी बेसिक जानथिबा दरकार डिटेल एते भितर को एबे जाय के किछि फायदा नै जति कि जानि थो ताकि ऑप्शन एलिमिनेट करि परिबो जे न्यू डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट होची डिटेक्शन ऑफ HIV जीनोम डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर सेल्स डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर 22 रा आंसर मु कहि दउ छै एटा बेसिक फैक्ट डिटेक्शन ऑफ HIV जीनोम एबे जहा हमें ये करछे पॉलीमरेज PCR डायग्नोस्टिक्स रे ताठु एटा टिके एडवांस फॉर्म GQRCP हला एति जानि तो HIV जीनोम डिटेक्शन करिया with reference to Indian Space Promotion and Authorization Center in space consider the following statement it facilitates the participants of private companies in space activities excluding building launch vehicles and satellites okay it functions as an autonomous agency in the Department of Science and Technology okay which of the statement given above is or are correct ए दीटा भितरु इन स्पेस विषय रे दीटा स्टेटमेंट दिया जे कोटा करेक्ट पचारि छी आंसर के करिया को ट्राई करबो 23 रो वाइंड अप करबा या परे ए पार्ट सरला परे आंसर होची यार 23 डी हैला कोन में भूल हैला दीटा स्टेटमेंट सेटा फर्स्ट देखि दबा एटी कोन दैछि एक्सक्लूडिंग बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स ना एतरे एक्सक्लूडिंग ना इंक्लूडिंग बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल्स इंक्लूडेड हैला आ गोटे सेकंड स्टेटमेंट काई बोला इट्स द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना एटा होची डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैला डायरेक्टली अंडर PM ऑफ इंडिया नेक्स्ट 24th क्वेश्चन जीवा with reference to Proba 3 space mission what a space mission consider the following statement it is a space mission launched by Roscosmos or the Russian space agency the mission is launched to study the far side surface of the moon through a satellite पचरछि कोन now which of the statement given above is or are correct Proba 3 मिशन विषय पचरछि न्यूज रे अछि एटा आगुर भी देखि जे 24 आंसर यार आंसर होची डी नाइदर वन नॉट टू दीटा जाको स्टेटमेंट भूल होची एटा तो फर्स्ट रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस नो यूरोपियन स्पेस एजेंसी आउ एटा मून को स्टडी करिया को ने सन को स्टडी करिया को सन रो कोरोना को स्टडी करिया को हैला ओके मूव ऑन करिया which of the following option is correct regarding ovarian cancer विषय पचरछि it originates in the peritoneum it is marked by abnormal cell growth it comprises epithelial and non epithelial ovarian malignancies all of the above यार आंसर 25 कहि दोछु मु यार आंसर होची all of the above ठीक अछि कारण originates in the peritoneum ने गोटे कवरिंग हमर इंटरनल ऑर्गन्स चारिपटे गोटे कवरिंग टाइप रो थाए सेटा को पेरिटोनियम कहै छै हैला तो इट कैन ओरिजिनेट इन पेरिटोनियम एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ कैंसर माने ही एब्नॉर्मल से सेल ग्रोथ हम काली कम पढितले हेप्लिक लिमिट विषय पढितले केमति कैंसर सेल ले सेटा वायलेट हे जाय हैला इट कंप्राइजेस एपिथेलियल एंड नॉन एपिथेलियल ओवरियन मैलिग्नेंसीज यस इट्स करेक्ट
एपिथेलियल सेल और नॉन एपिथेलियल सेल बोथ जगह मैलिग्नेंसी देखा दिबो. नेक्स्ट, consider the following statement. The basic building block of plastics are monomers which join together to form polymers through polymerization. Microplastics are plastics ranging between 5-10 millimeters in diameter. ए भितरु स्टेटमेंट करेक्ट कोटा? करेक्ट स्टेटमेंट पचार माइक्रोप्लास्टिक विषय प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक 26 रा आंसर. यार आंसर खाली ए ही करेक्ट बिकॉज माइक्रोप्लास्टिक होची लेस देन बिटवीन देछिनो लेस देन 5 मिलीमीटर्स हला माइक्रोप्लास्टिक लेस देन 5 मिलीमीटर तो खाली एटा करेक्ट बीटा भूल. नेक्स्ट 27 जीवा. With reference to genetically modified crops, consider the following statement. Crops that have undergone genetic engineering process to alter their DNA are referred to as genetically modified crops. Crops that have undergone genetic engineering processes to alter their DNA are referred to as genetically modified crops. So, genetic engineering process conduct करके तांकर DNA को alter कराई थी तांको खेत पे को आ जाऊ genetically modified crops. Okay. Next, BT cotton and GM mustard are the only two genetically modified crops commercially grown in India. एथरे पचारची which of the statement given above is or are correct. दीटा स्टेटमेंट पढ़िलो भलसे पढ़ी दियो देन ऑप्शन को जिवो हैला देन ऑप्शन को जिवो. एटा लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट. One only, two only, both one and two, neither one nor two. यार आंसर कौन 27 रो यार आंसर होची ए वन ओनली. बेसिक तो कहि डीएनए मॉडिफिकेशन करा हला तो सेठू कोन हला ताकू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हला. सेकंड रे से कोन कहितला ना खाली गुड स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कोन थिला BT cotton and GM mustard are the only two genetically modified crops commercially grown in India. Currently खाली BT cotton ही grow करा होच. एवडा सबू ट्रायल फेज रे होची एक्सपेरिमेंट फेज रे होची. GM mustard हला GM BT brinjal ए सब जिंसो GEC अप्रूवल देनी गोटे लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन करिया पे हला. BT cotton is approved by GESC. GESC विषय टिके पढिया को ट्राई करियो. एटा गोटे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टा जे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कमर्शियलाइजेशन हम केमती ता ऊपर रिलेटेड का माने कोन करे लाइसेंसिंग टाइप रो कि अप्रूवल टाइप रो काम करे हला. तो जीईएसी या विषय पढ़िया को ट्राई करियो हला ये ऑर्गेनाइजेशन विषय. ओके लास्ट क्वेश्चन को मूव करिया. Which of the following statement is not correct regarding fentanyl हला एटा गोटे ड्रग टा fentanyl हला. It is a synthetic opioid drug used to treat severe pain. It is a medication with no risk of addiction or dependency. It is approximately 100 times more potent than morphine. Morphine टा भी गोटे ड्रग से पेन पे यूज करा जाए. For Americans, it is now the leading cause of death among the people aged 18 to 45. से पचारची not correct statement कोटा. Last question आज रहेटा. यार आंसर होची बी हला मेडिकेशन विथ नो रिस्क ऑफ एडिक्शन. बहुत रिस्क थाई जिनसर एडिक्शन को. इट इज यूज्ड एज अ मेडिकली यूज करा जाए एज अ पेन रिलीवर ड्रग एनाल्जेसिक्स हला. बट एटा मिसयूज भी करा जाए लाइक मॉर्फिन हेरोइन एटा को बहुत मिसयूज करा जाए आ एटा बहुत अधिक एडिक्टिव और मेजर कॉज ऑफ डेथ इन अमेरिका हला. बुझियला ड्रग टा जानि था फेंटानिल. सो आज डिस्कशन एतिकी सरला. मेजर करंट अफेयर्स हमें ट्राई कले डिस्कस करिया को. वीडियोस देखि कि 2x स्पीड रे कि 3x स्पीड रे ट्राई करिवो. गोटे थरा रिवीजन कर दबो स्पीड रे बेसिक फैक्ट्स गुडा जट डाउन कर दबो. कम टाइम रे बहुत जिंस रिवीजन भी हे जिवो और बेसिक्स गुडा ट्राई करिवो आउ थरा रिवाइज करिया को. जो स्टैंडर्ड सोर्स तो मैं रिफर करछु से ट्राई करे ये करिया को रिफर करिया को. सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर coming OPSC Prelims exam. Thank you.